आप लोग का म्यूजिक तो माशाल्लाह जोर से गाएं, सब जोर से गाएं। जोर से। भाई इतनी गाएंगे जितनी जोर आवाज़ है। लगा के है ये। मेरे साथ जो माइक है वो नहीं चल रहा है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं है। मुझे म्यूज़िक बहुत लाउड लग रहा है, आवाज़ें बहुत कम लग रही हैं। ठीक है। Give us 5 minutes. कड़वी ठोकर ना खाए, कटर ना छाए तेज हवा, तूने है उड़ना छाए तेज हवा, ख्वाबों से आगे अब है गुजरना छाए तेज हवा, तूने है उड़ना छाए तेज हवा, मेरे परों को मिला तेरी, तेरा आसमां, हाँ मेरे परों से परों को मिला, ज़मीं है तेरी, तेरा आसमां, देखे जो सपने वो पूरे हैं करने हमने, जैसे वादे निभाने निभाने हमने, देखे जो सपने वो पूरे हैं करने हमने, जैसे इरादे निभाने निभाने हमने। ठीक है, वी आर गुड, थैंक यू, दिस इज ग्रेट, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। पहन लूं? हाँ हाँ हाँ, Bye bye. Thank you. You guys sang really well. All the best. Beautiful, beautiful. And we will do a better job. No, next time after 2 hours. हेलो। यार माशाल्लाह, पाक फौज के चाबुक दस्ते आपको सलाम पेश करना चाहते हैं। हाँ, चार हैं तो चार, लेकिन आप बोलें तो पांच भी कर सकते हैं। 5
Two, hello, hello. Check, one, two. Hello, hello. माइक नहीं चल रहा अब चल रहा है यू कैन हियर मी ग्रेट अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद A very, very warm welcome to you at the 6th edition of the WOW Women of the World Festival. मेरा नाम फातिमा मलिक है और मैं ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान आर्ट्स टीम का हिस्सा हूँ. आज हमारी ओपनिंग के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल ट्रीट फॉर यू. आप सबको ये नाम बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा. वन ऑफ आवर कंट्रीज बिगेस्ट सुपरस्टार्स जो अभी पसूरी फेम की है, उनका नाम है शे गिल. Hello. Hello. Hi, everybody. How are you all doing? Okay, I can't hear any. Let's start.
थैंक यू, थैंक यू। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। के धूप छाँव का, के धूप छाँव
clap for my band. They're amazing. यहाँ पर नाजिया हसन किस किस को पसंद है? You're gonna like this one then. दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल रोज नए सपने दिखाने वाले
दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले 1 2 हाँ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम बूम हाँ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन मेरी सांसों को तेरी धुन दिल बोले बूम बूम Thank you. I'm glad you guys liked it. नीले नीले अंबर गाते हैं अब. Let's go. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ाए जब
Guys, if you know a little bit of sukoon, please sing along with me. Thank you. Let's go. Let's do Pasuri now, guys. Can you all please do me a favor and come forward, like stand a bit? I want a little bit of energy for this, man. I'd really appreciate it if everybody could come forward. Easy, they're all nice people. Nobody's gonna say anything. Ready? You're gonna start, okay? Ali's part. That's your job. Let's go. ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ
आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे क्यों दी चूरी नू रावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी मैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बनिया बनाइयां दी जब बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा बेसहारा हमेशा की अधूरी नू सारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी था होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बनिया बनाइयां दी जब बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे Can you guys move a little bit please? Yeah, that's what I'm talking about. मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे जहाँ सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे बना दे सजा दे बना दे मजबूरी नू आने जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू बाबा ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बनिया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे Thank you guys. Thank you. You were wonderful, all of you. Have a great day. Bye. Hello, 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 hello. Thank you, Shay. That was absolutely wonderful. We could not have asked for a better opening of our festival. Thank you. Could we have another round of applause, please, for Shay and her wonderful musicians? एंड अब हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तकरीबन 10 मिनट में हमारा ओपनिंग पैनल शुरू होने वाला है अभी स्टेज का सेटअप चेंज हो रहा है तो आप 10 मिनट प्लीज़ सब्र कर लें थैंक यू Royal Milli, a digital experience. In this exciting collaboration, Lahore Digital Arts Festival has curated a special exhibition of 5 family artists to display multimedia digital artwork as part of the Women of the World Pakistan Festival. The theme of the festival is Ral Mili, the Saraiki word for coming together as a community. The theme builds upon the ideas of community, of care, and imagines ways to build back better, strengthen bonds, heal wounds,
find joy, and salvage the earth we walk on. We want to internationally build and nurture each other within a framework of radical love for community and acceptance of the fact that lack of access to community infrastructure, culture, and tradition breeds desolation. How to navigate in the exhibition. You can explore this place on a mobile phone or desktop computer, but the experience will be better on a larger screen. You can walk through the exhibit by navigating with a mouse or by clicking the arrows, or you can click directly on the artworks and you'll be taken directly to them. A few of the works are auto-visual. Make sure you have your speakers plugged in or headphones if the videos don't autoplay. Look for the symbol. The exhibition will be available from March 4 to 18th on wowvirtual.pk.
check, check. रल मिल उससे बहुत ही इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और हमने जो ये पैनल क्यूरेट किया है इस टॉपिक के लिए, वो इसलिए किया है क्योंकि जो इस साल क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स है, that has mainly and predominantly been led by women. And so we felt it was very important because they are at the forefront of the response to climate change. It was very important to gather a range of voices, a range of different views
from different walks of life to come and talk to us about this issue that affects all of us. So without further ado, I will pass it on to our moderator, Mehreen Umar Sahiba. I'm Mehreen Khan, and it's wonderful to be able to moderate this session. We have an amazing panel with us. और मुझे पता है कि शेर गिल के बाद हमारा काफ़ी मुश्किल टास्क है आप लोगों को इंगेज करना. हम गा भी सकते हैं बीच में, लेकिन उनकी तरह नहीं. अच्छा, तो जैसे कि हमारी एमसी ने कहा, ये जो पैनल सेशन है, it's about climate change and building resilience within communities, जो कि उर्दू का तर्जुमा बड़ा मुश्किल है इसका करना. लेकिन मैंने थोड़ा गूगल किया तो इसका बनता है कि माहौलियाती तब्दीली के लिए लचक पैदा करना. तो दैट्स द उर्दू ऑफ इट. अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा उर्दू चलता जाएगा, और मैं चाहूँगी कि आप गौर से सुने, इसलिए कि हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं, एक आई हैं हमारी लाहौर से, एक ट्राइबल एरिया से, एक हैदराबाद से और एक कराची से. So we're truly representative of the country, and it's wonderful for me to be able to introduce on my right Miss Qurratul Ain Wazir. और ये आई नौशेरा से असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और शायद आप लोगों ने देखा होगा इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे. सैलाब से पहले इन्होंने ख़ुद जा के घर घर लोगों को, ख़ास तौर से मर्दों को वो किया था परसुएड कि आप घर छोड़ें इसलिए कि पानी आने वाला है. और इन्होंने वाकई एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम कर दी है आने वाले दिनों के लिए. मेरे ख्याल से तालियां होनी चाहिए मिस वज़ीर के लिए. She is a truly inspirational woman leader in her own right. Then next to her, it's Aisha Amin. Aisha is wearing a lovely yellow sari today. And ये representative हैं अपनी NGO की जिनका नाम है बैठक. And Aisha's organization deals with gender justice, especially promoting reproductive and sexual health issues, which of course is extremely important, and her work focuses in Sindh. Round of applause for Aisha. Let's welcome her, please. Then on my left in red, we have traffic lights represented, red, yellow and green today. Dr. Fazilda Nabil. She is the provincial coordinator of the Living Indus Initiative, which is a very important job. It's a brand new portfolio, जो कि UN ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके ये इनिशिएटिव किया है शुरू, जिसमें 20 से 25 इंटरवेंशंस होंगे, जिसका मकसद ये होगा कि जो इंडस रिवर है हमारा, जो लाइफलाइन है पाकिस्तान की, उसकी इकोलॉजिकल जो बेहतरी है वो की जाए. So a round of applause for Fazilda, who's come all the way from Lahore. And to my left in the second seat is Hira Wajahat, local, yes, from Karachi. Your peeps are here, Hira. From Stimulus, she's the project and program manager for sustainable and clean technologies and innovation in this space, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. और वो हमको बताएंगी कि जैसे ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ को लीड कर रही हैं, लेकिन इनोवेशन में भी हैं और नई नई तरह की जिद्दत पैदा कर रही हैं इस फील्ड में, जहाँ पे आगे जाके हमारी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ होंगी, which will allow us to have a green economy and become a really a force to be reckoned with. आपको पता है पाकिस्तान में IT कितना ज़्यादा उरूज पे है. तो nice round of applause for Hira as well, and let's get started. So the first thing I want to ask is, with a show of hands, आप लोग हाथ उठाइए. Have any of you, आपके रिश्तेदार या जानने वाले, had been directly impacted by the floods in Sindh? Anyone? One? Anyone at the back in the chairs? Any? अच्छा, किसी ने काम किया था
सैलाब ज़दगान के लिए कोई रिलीफ वर्क किसी तरह का? वेरी गुड, ठीक है. सो इट्स गुड टू सी दैट सम पीपल विल हैव a lot more knowledge. So let me start off first of all. Miss Wazir, आपको काफ़ी लोग यहाँ जानते हैं पर्सनली तो नहीं, लेकिन आपकी वीडियो देखी थी. आप ज़रा ये बताइए, वो एक इतना ज़्यादा मकबूल हुआ था वो वीडियो कि एक ख़ातून होते हुए, असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए आप घर घर गई और आपने मर्दों को बताया, और वो भी पठान मर्द ट्राइबल एरियाज़ में, कि भाई आप लोग निकलिए अपने घरों से, ये सेफ़ नहीं है, सैलाब का पानी आने वाला है. ज़रा बताइए कि वो क्या मंज़र था और आपके क्या फीलिंग्स थी, इमोशंस थी जब आप ये काम कर रही थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ. आई एम कुरतुलैन वज़ीर. आप शायद मुझे मिस वज़ीर के नाम से जानते हो. आई एम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, और अभी भी मैं नौशहरा में ही तैनात हूँ. मैडम ने जो क्वेश्चन किया उस हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि मेड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडीएमए से हम इन कांटेक्ट थे, और हमें 1 मंथ प्रायर ही बता दिया गया था कि मूनसून इस बार काफ़ी जो है नौशहरा को मूनसून या फ्लड्स जो हैं हिट करेंगे, तो आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो फुल जो है आपने करनी है. तो ऐसा नहीं था कि फ्लड्स आए और हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने फिर जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया. 1 मंथ पहले ही हमने अपनी तैयारी पकड़ी थी. हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, CNW है, TMAs हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स, ऑलरेडी हम कांटेक्ट में थे. कंट्रोल रूम हमारे इस्टेब्लिश हो चुके थे, और एक ही मैसेज जाना था गाँव में कि आप लोगों ने जो है फ्लड्स हिट कर रहे हैं नौशहरा को, तो आप लोगों ने जो है यहाँ से निकलना है. मैम, आपने जो क्वेश्चन किया वो हमारी ये सिचुएशन थी कि हमारे काबुल रिवर के साइड पे जो है प्रोटेक्शन वॉल है, एम्बैकमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन हमारा जो फ्लड नौशहरा को हिट कर रहा था वो था हमारा 3,75,000 क्यूसेक, और हमारे काबुल रिवर की जो कैपेसिटी है वो 1,25,000 क्यूसेक है. तो इतने हाई लेवल का फ्लड जब इफ़ेक्ट कर रहा था, ज़ाहिर है ओवरफ्लो ही होना है वाटर ने. तो ओवरफ्लो के लिए हमारे पास बस एक ही चांस था कि हमने एवैक्यूएशंस की तरफ जाना है. जितने हम ज़्यादा एवैक्यूएशंस करेंगे, हमारी पब्लिक या हमारे जो जितने भी वहाँ पे शहरी थे या आवाम थे, वो उतना ही हम उसको सेव कर सकें. तो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने 3:30 बजे रात को कॉल की कि सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, एंड दिस इज़ द लास्ट अलर्ट, कि बस इसके बाद हमने फील्ड में जाके एवैक्यूएशंस करनी है. तो वो एक सिचुएशन था, और हमें बार बार रिपोर्ट्स भी आ रही थी फील्ड से, चूँकि फील्ड में हमने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के हमारे मेल जो हैं ऑफिसर्स हैं उन्हीं को इंगेज किया था. लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की कॉल आई कि मैडम जो है 32 मौज़े हमारे ऐसे हैं जो बहुत हाईली इफेक्टेड हैं, तो वहाँ से लोग नहीं निकल रहे, आप खुद जाके इनको एवैक्यूएट करें. ज़ाहिर है मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी था. और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यूजुअली जो होते हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट का करते हैं, फील्ड में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते हैं जो PPS 17 के होते हैं. तो वो जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया, मेरे पास 2 ही घंटे थे, और उसमें 700-800 फैमिलीज़ आप एवैक्यूएट करें, साथ में उनके कैटल को भी मूव करें. इट वाज़ वेरी हार्ड टास्क फॉर मी, लेकिन निकलना था. जब मैं निकली हूँ तो मुझे सिचुएशन का पता चल गया है कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे. बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड था. ज़ाहिर है उनकी अटैचमेंट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स के साथ, तो इतना आसानी से नहीं था. लेकिन फिर उसके बाद मुझे, जो कि मेरे डोमेन में नहीं था, लेकिन मुझे बोलना पड़ा. अब मुझे नहीं पता कि वो उनको अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन मुझे सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास 2 घंटे के बाद जो है नौशहरा के बहुत सारे जो हैं हमारे मौज़े जो हैं वो डूब जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ. तो उस वक्त जो है मैंने उनको बताया भी कि आप निकलें, नहीं निकलेंगे तो फिर मैं पुलिस के साथ ज़बरदस्ती आके आपको घरों से निकालूंगी. तो दिस वाज जस्ट अ मैसेज. बिल्कुल, तालियां ज़रूर बजाएं. ये जिस इलाके की बात कर रही हैं वहाँ पे ये काम करना, वो भी एक ख़ातून के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और यही मैसेज था कि लोगों ने इसको सीरियस लिया, क्योंकि वहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो तो अपने मर्द पे जो है डिपेंडेंट होती हैं. वो मेरी बात कैसे सुन सकती हैं? उनके आपके मशर से, उनके घर के मेंबर से, उनके एल्डर से आपने पूछना होगा कि आप निकलें. जब तक मशर को आप जो हैं उसके एल्डर को एग्री नहीं करते, कोई वहाँ से नहीं हिलता. तो उनको इससे सख्ती से मैंने इसलिए उनको बोला है कि देखिए इसके बाद मैं आऊँगी, और मैंने आना भी था पुलिस के साथ, मैं उनको वहाँ पे फिर भी ना छोड़ती. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा ये मैसेज गया लोगों तक, हम गए हैं डोर टू डोर, हमने लोगों को उठाया है और उनके कैटल्स को मूव किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने निकलना शुरू कर दिया. और वही वजह है कि पोस्ट फ्लड में उन्होंने देख लिया कि वही जितने भी हमारे इलाके थे वो सब मर्ज हो गए थे फ्लड्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा के जितने भी लोग थे वो सेफली मूव हो गए थे हमारे रिलीफ जोन में. बहुत बड़ी बात है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई.
आपके इलाके में? जी मैम, हमारे सिर्फ 475 घर हमारे डैमेज हुए थे फुली। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी, कोई जो है डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि कैटल भी हमने मूव कर दिए थे, जो कि हमने रोड की साइड पे उनको कुछ एरिया दे दिया था, वहाँ पे हमने बांध लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी जो है कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। एक्सलेंट, एक्सलेंट, थैंक यू। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करूँगी हिरा। हिरा, आपने कैसे देखा कि जो फ्लड्स और सैलाब आए थे 2010 में भी, फिर लास्ट ईयर भी, उसके दौरान आपने क्या डिफरेंस महसूस किया इन द रोल ऑफ वुमेन एंड हाउ दे लेड कम्युनिटीज़, और हाउ यू फाउंड दैट वुमेन वर मोर रिस्पॉन्सिव टू द फ्लड्स दैट हैपेंड लास्ट ईयर? थैंक यू मेरीन फॉर द क्वेश्चन। मुझे ये लगता है कि 2010 में जब पहली दफ़ा फ्लड्स आए थे, शायद हमारी अवेयरनेस, हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इस दफ़ा काफ़ी चेंज एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, नॉट जस्ट फ्लड्स के अंदर बट ओवरऑल लास्ट 4-5 साल से मेरा काम क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़, क्लाइमेट वेंचर्स के साथ चल रहा है, और जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उसमें मोर देन 50% विमेन पार्टिसिपेंट्स who are working on technologies related to agriculture, aerospace, energy, मुख्तलिफ़ किस्म की वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो कि मिटिगेशन, अडेप्टेशन, रेजिलियंस की तरफ काम करती हैं। सो ये वो ख़वातीन हैं जो ड्यूरिंग प्री फ्लड्स, पोस्ट फ्लड्स, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कंडीशंस आर, ये दे कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स ताकि दे आर मेड मोर एक्सेसिबल टू द पीपल हु नीड दैम। बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस तरह के आपकी सोलर लाइट्स या वो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, वाटर सिस्टम्स होते हैं, बट थिंग्स दैट फ्लड अफेक्टेड पीपल नीड मोस्ट, रिहेबिलिटेशन की तरफ जब जाने लगते हैं तो हमें उनको इमीडिएट चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करनी है टू हेल्प देम कम आउट ऑफ देयर चैलेंजेस। बट व्हाट आई सी एज अ मेजर डिफरेंस दिस ईयर इज़ दैट a lot more women are aware, a lot more women are taking action, a lot more women are on the field during the immediate आप कह लें कि जिस वक्त सैलाब आया हुआ है उस वक्त भी, बाद में भी, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी, so much more engagement. Thank you. Aisha, your organization deals with a subject which is usually taboo in Pakistan. People don't, even in the home or in public, talk about women's reproductive health, particularly menstruation issues. जब एक सैलाब आता है, एक क्राइसिस आती है, तो लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि जो ख़वातीन इससे गुज़र रही होंगी उनके लिए क्या सहूलत फ़राहम कर सकते हैं. In fact, it's even when I was preparing for this seminar, I thought, wow, that's something I hadn't thought of. कि एक तो आप पानी में हैं, आपका घर चला गया, आपके कपड़े चले गए, आपके पास खाने को नहीं है, and then you have your period, and like on top of everything. And can you imagine what you do in the middle of this village and how you cope with that? So Aisha, tell us how your organization have been helping women in that situation. So as you mentioned कि कभी भी crisis जब आता है, सैलाब हो या कोई भी crisis हो, तो immediate thought होती है कि लोगों को shelter देना है या उनको खाना पहुंचाना है, right? जो स्टिग्मेटाइज टॉपिक्स होते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गया या और भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ हैं, दे डोंट गेट अटेंशन, क्योंकि हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी, एज यू सेड, वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज़. बट दैट डजंट मीन कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते. सैलाब में पीरियड्स तो जब आने होते हैं, इनफैक्ट आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड रिलेट कि जब हमें होता है कि नहीं आए उसी दिन वो पीरियड्स आ जाते हैं, यू नो. So they don't stop for a climate crisis or any sort of crisis. और हमारा जो काम है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी इमीडिएट थॉट ही ये जाती है कि लड़कियां और ख़वातीन क्या कर रही हैं. सो इवन इन पेंडेमिक आवर थॉट वाज कि लॉकडाउन में ख़वातीन कैसे एक्सेस कर रही हैं जब उनको मोबिलिटी नहीं है, हाउ आर दे एक्सेसिंग पैड्स. और सैलाब में भी हमारी फ़र्स्ट थॉट यही थी, क्योंकि जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम कर रहे थे वो भी डिस्प्लेस हुई थी, तो वहाँ से हमें पहले नीड आना स्टार्ट हुई कि दे नीड पैड्स, बिकॉज हम वहाँ पे ऑलरेडी वो नॉर्मलाइज कर चुके थे, वो एक उनकी कि दे वर मोर ओपन टू आस्किंग फॉर इट. इस तरह हमारा एक इनिशियल रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ. सो अ लॉट ऑफ आवर वर्क फर्स्ट वॉज प्रोवाइडिंग इमीडिएटली कि उनको कुछ भी पैड्स की ज़रूरत है तो पैड्स दें.
अंडरवेयर्स की ज़रूरत है तो अंडरवेयर्स दें, अगर उनको क्लॉथ पैड की ज़रूरत है तो वो दें. लेकिन what we also did was have conversations with young girls and women because they were already going through a lot of trauma. स्पेशली जो यंग लड़कियां थी जिनको फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर एक लड़की से मैं मिली थी, शी वॉज 13 और 14 ईयर ओल्ड, शी वॉज़ वेरी यंग, और उसको उसी फ्लड कैंप में उसको अपनी फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे. और हमारे पास वैसे भी क्योंकि बात नहीं की जाती, एक टैबू टॉपिक है, तो लड़कियों के लिए जब उनको पहली दफ़ा पीरियड्स आते हैं वो इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. गर्ल्स डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर बॉडी. there is a certain shame attached to that bleeding, and then उसको कपल करें आप वो जो bodily changes होते हैं, और फिर being displaced from your home, not having access to washrooms, right, losing your siblings. We met young girls who had lost their siblings in those floods. Imagine that with the experience of having your period for the first time. So this 13-14-year-old girl, I remember, she came to me and told me that she is feeling disgusted, because she had, उनके पास कपड़े भी लेने का काफ़ी ख़वातीन और लड़कियों के पास टाइम नहीं था. वो एक जिस जोड़े में थी या एक जोड़ा उठा के वो आई थी, तो उनके पास साफ़ कपड़ा भी नहीं था, अंडरवेयर्स नहीं थे, पैड्स नहीं थे. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ इग्नोर्ड. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी, लेकिन normal circumstances maybe, lekin especially in climate crisis. So these were the circumstances we were dealing with, I mean the women were dealing with. I do also want to share that usually क्योंकि हम सोचते नहीं हैं तो हमें नहीं पता होता, but when we started having conversations with women, I was shocked despite having worked in this field for so long, कि ख़वातीन जो खड्डा, जो पानी के, बारिश का पानी जो जमा हुआ था ना, उसमें वो कपड़ा धो रही थी और वो यूज़ कर रही थी. इमेजिन द हेल्थ issues that these women were going through. So a lot of our work was understanding what the needs were and providing them what they needed. Well, that's fantastic that you thought about that and that your organization is addressing an issue which so often gets overlooked for women. Because इसमें चैलेंज ये है कि क्लाइमेट चेंज की जो स्पेस है उसमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ख़वातीन नहीं होती उमूमी तौर पे. लेकिन it's good news that people like Dr. Fazilda are now leading policy discussions so that the female viewpoint can be brought in. जहाँ पे decisions लिए जाएंगे अब, वो जेंडर ब्लाइंड नहीं होंगे, वो जेंडर डिफेक्टिव नहीं होंगे, उसमें ख़वातीन का पर्सपेक्टिव आएगा. तो Fazilda, tell us about the Indus initiative. This is obviously at the government level and it has quite a few interventions, but what does it mean to ordinary people? What should the audience know about it? Thank you, Marine. Thank you for that question. So the Living Indus plan is, or the Living Indus initiative is a mega initiative. और इसके अंदर 25 सब इंटरवेंशंस हैं और each sub intervention is in itself a master plan. For instance, as Minister Sherry Rahman was talking in her address yesterday, she referred to the plan. It has things that citizens of the Indus, us citizens of the Indus would love. It has it advocates for the establishment of 10 zero plastic waste cities along the Indus. The Indus is the second most plastic polluted river in the world. दुनिया का दूसरा plastic polluted river है Indus. And imagine, if we establish that kind of circularity in our plastics use, reducing, reusing, and establishing that circularity, what it would mean for us as citizens. It has things like कि river के अपने rights हैं, river के ecosystem के rights हैं, हमारी mangroves के rights हैं, and the setting is just perfect because we're sitting right next to the mangroves here. So giving the river and its ecosystems rights of legal personhood. It advocates for an Indus Protection Act कि आप जो Indus River है, क्योंकि उसने हमारी इकोलॉजी को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉपुलेशन को पिछले 5000
से ज़्यादा सालों से वो सपोर्ट करता आ रहा है. You know, if you look at all of life in this region, it has been supported by the industry for agriculture in Pakistan, industry in Pakistan, Pakistan's economy, Pakistan's population. Everything depends on the Indus, and this Indus it's now undergoing massive degradation, not just because of climate warming, but also because of pollution, because of biodiversity loss. So the initiative is, what is different about this initiative is it's not advocating the construction of, for instance, dams. It's not advocating that you spend so many $1 billion on grey infrastructure. It's advocating that you go back to nature. So you go back to nature and natural ways of conservation in order to save nature. You go towards nature-based solutions, ecosystem-based adaptation initiatives. आप community storage ponds बनाएं, आप communities को involve करें, eco tourism की तरफ आएं, led by communities, led by women, so that it leads to progress. It's an extremely forward-looking initiative, crafted by crafted and drafted by the best minds in the climate space. And I really hope it was passed by the federal cabinet last September. They took it to COP. I really hope that it translates well from being a plan to being a plan of action and actually being implemented on ground. तो इसकी timeline क्या है implementation की? So the timeline ranges depending on कि आप कौन सी intervention को देख रहे हैं. The timeline ranges between 5 to 15 years. कुछ interventions 5 साल में हम achieve करना चाहते हैं. For instance, जो Indus Protection Act है, Indus को एक rights of the river देना, rights of nature देना. कुछ interventions को ज़्यादा time लगेगा. Their timeline is greater. So some are 10 years, some are 15 years. लेकिन ये एक पाकिस्तान जो कि एक बहुत climate vulnerable मुल्क है. We are among the top 10 as we know. और जो पिछले साल के floods थे, they were just a snapshot. हमारी floods की, we also need to understand that last year's monsoons were a very direct result of climate change. जिस तरह हम कहते हैं ना वो monsoon on steroids. क्योंकि पिछले so since 1961 Pakistan has not had an August that was this wet. So last year was the wettest August since 1961. कुछ research ये भी show करती है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो rains आई, they were 75% more intense than they would have been if the climate had not warmed up by 1.2 degrees Celsius. So a lot of data suggests that the monsoons were not an erratic one-off event. They were a direct result of climate warming, and it was a very slight snapshot of what could happen in the future. That's an interesting point, because there is a direct link between the change in global warming and these extreme events, right? Now that's statistical. तो अगर हम पीछे की तरफ सोचें तो 2010 में जो सैलाब आया था और 2022 में जो आया तो उसमें काफ़ी फ़र्क था. आपसे मैं कुरतलैन पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस 2010 में क्या था आपके उस नौशेरा के इलाके में? मैम आई वुड लाइक टू ऐड कि 2010 में तो मैं सर्विसेज में नहीं आई थी. आई एम फ्रॉम मैंने जो ज्वाइन किया मैंने 2012 में. जी बिल्कुल मैम. फ्लड्स जब हमारे नौशेरा को हिट करे थे, ऑफ कोर्स मैंने वीडियोस देखी थी, लेकिन उस वक्त हमारा ये था कि हमारी प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं थी. हमारी जो काबल रिवर है उस वक्त प्रोटेक्शन वॉल्स हमारी नहीं थी, और तबाही इसी वजह से हुई थी जिसने हमारे डेथ हुए थे. और जो हमारा क्रॉप का जो है डैमेज हुआ था, जो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया या कमर्शियल एरिया जो हमारा डैमेज हुआ था, वो इसी वजह
वजह से हमारी प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं थी, हमारी एम्बैंकमेंट नहीं थी। लेकिन जब 2010 का सैलाब आया तो लोगों को पता चल गया कि मतलब हमने अभी क्या इस तरह की जो है कोशिशें करनी है जिसकी वजह से कोई भी सैलाब आए तो हमारी इतनी तबाही ना हो, जिसके लिए फिर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन वॉल और एम्बैंकमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए, जिसकी वजह से जो है हमारा सैलाब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। तो अभी जो हमारी सिचुएशन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी प्रोटेक्शन वॉल की कैपेसिटी ही 1,75,000 क्यूसिक है, और आपका जो ये रेला आपसे गुजरता है ये जो है वो आपका 3,75,000 क्यूसिक है। तो दैट्स ह्यूज जो है हमारा डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन वॉल से ओवरफ्लो होता है पानी का हमारे इलाकों की तरफ। तो इस यानी एक तरफ तो नौशेरा इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी to show that when you take the right policy initiatives, you can prevent the disaster or you can mitigate the disaster to an extent. So when they built the early warning system and the protection walls on the River Kabul, that led directly to the much better results that we saw in 2022. मेरा सवाल आपसे ये है कि 2010 के बाद जो भी उन्होंने मंसूबे बनाए, इम्प्लीमेंटेशन की, उससे एक वाज़े फ़र्क नज़र आया 2022 में। मैम मैंने अगर इवैक्यूएशंस की या मेरी टीम ने इवैक्यूएशंस की तो पूरे नौशहरा का तो पॉसिबल नहीं था। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन वॉल की वजह से मेरा नौशहरा बच गया था जी। लेकिन मैम इससे मैं आप बात आगे बढ़ाते हुए ये पूछूंगी कि अब 2022 के कौन से वो लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं ताकि आइंदा कोई ऐसा हो हादसा जो कि अनफॉर्चुनेटली होगा तो हम और ज़्यादा प्रिपेयर्ड हों उसके लिए। व्हाट आर द लेसन्स लर्नड? मैम देखिए, मैं तो खुद फील्ड में रहती हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि मतलब आपको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जब फ्लड्स में हमने जो ड्यूटी की, इमरजेंसी नाफिज हो गई हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि नेचुरल कैलेमिटी क्या होती है, फ्लड्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या है, हमारे बच्चों को तो नहीं पता। तो ये चीज़ें जो है मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये बच्चों के लिए कंपलसरी बनाएं, उनके सब्जेक्ट में रखें, स्कूलों में पढ़ाया जाए कि नेचुरल कैलेमिटी क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर किस चीज़ को बोलते हैं, फ्लड्स आते हैं बेटा आपने क्या करना है, अर्थक्वेक आता है आपने कौन से ऐसे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से आप अपने घर को बचा सकें। तो एक तो इस चीज़ को कंपलसरी बनाना चाहिए, हमारे लोगों में लेक ऑफ नॉलेज है। दूसरा ये कि हमारे नौशहरा में जो है कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, उनके अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। हमारे गवर्नमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो हो जाती है, ऑफिसर्स की भी हो जाती है, ऑफिशियल्स की भी हो जाती है, पीडीएमए एनडीएमए की तरफ से फायर फाइटिंग की जितने भी टीम्स आते हैं वो हमारी तो ट्रेनिंग कर देते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये तो उनको पता ही नहीं है कि फ्लड्स किसको बोलते हैं या फ्लड किस लेवल का आना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या आपको अलर्ट मैसेज कर रहा है, एनडीएमए क्या कह रहा है। तो मेरी अपनी जो ज़ाती राय है कि अगर हम कम्युनिटी को इंगेज करें तो जिस तरह मैं इवैक्यूएशंस कर रही थी, लोग जो है इनकारी थे, वो घरों से नहीं निकल रहे थे, तो ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। कम्युनिटी इंगेज होती, टाइमली उनको जो है, जिस तरह हमारा कंटिंजेंसी प्लान आता है मार्च में, हम उसको अपडेट करते हैं कि मार्च में हमने कंटिंजेंसी प्लान जितने भी हैं हमारी तैयारी फुल है, हम हर किस्म की इमरजेंसी को मीट कर सकते हैं। इसी तरह मार्च से ही हमारी जो है कम्युनिटी जो है उसको इंगेज करना शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरे जो है नौशहरा में 154 मेरे VCNCs हैं तो उनमें हमें प्रॉपरली जो है कम्युनिटी सेशंस करने चाहिए, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, PDMA की तरफ से जो है उनके ऑफिशियल्स आएँ, लोगों को बताएं, फ्लड्स पे उनको जो है इंगेज करें, अर्थक्वेक के बारे में बताएं, तो इसी वजह से जो है लोगों में अवेयरनेस आएगी तो जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। तो इसमें आपने दो बहुत अहम नुक्ते उठाए। वन इज़ climate literacy, so that people actually know and understand what the issues are surrounding climate change. And the other is climate communications. How do you communicate with communities, the public, through mass media or social media to make people aware of the issues and to take action in times of crisis? So literacy and communications. So let me come to Aisha on this. Aisha, through your organization, you talked about the fact that you had these discussions with the ladies and you knew their needs and their requirements, you understood that, and then you responded accordingly. यानी आपकी organization ने ये नहीं किया कि बस एक checklist बना दी और अपनी तरफ से वो कर दिया, आपने actually on the ground, grass roots पे काम किया और समझा कि लोगों की क्या वहाँ ज़रूरियात हैं और कौन से barriers हैं वहाँ पे. So tell us a bit about that process of understanding and educating the communities and learning from them.
I think that's a very, very good question. So most of the work that we do, in fact, you know, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम ज़रूर ये देखते हैं क्योंकि हम ग्रास रूट्स पे काम करते हैं, as you mentioned, right? और ग्रास रूट्स पे आप बिना कम्युनिटी को इंगेज करके आप काम नहीं कर सकते हैं, you know. So and it's a very difficult process, I should say, that you know going आप एक disaster hit areas में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके safety issues भी काफ़ी होते हैं, right? And then also having women talk about things जिनका वो default उनकी thinking नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम खवातीन से बात कर रहे थे तो वो हमें उनका भी, because the default is they would ask for ration, they would ask for you know something for their children, right? क्योंकि हमारे पास तो खवातीन अपनी needs को भी prioritize नहीं करती हैं, right? So we spent hours in these camps trying and understanding कि कौन से मसले हैं, right? Which is again a very difficult process. और मिस वज़ीर गवर्नमेंट की बात कर रही थी, आई थिंक एक लेसन गवर्नमेंट के लिए भी है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू go and sit like Miss Wazir did, that she went and was with the communities. But unfortunately, by large, हमने government को देखा कि वो absent थी, right? You have to go sit and have these conversations and understand कि needs खवातीन की क्या है या और भी sections की क्या है. But because I work in gender and I feel like the climate crisis response is gender blind, so वहाँ पे हमारा gap ज़्यादा है. तो ये एक बड़ा lesson है कि to go and understand कि अच्छा. And interestingly we also saw बहुत ही interesting gender के ना dynamics दिखे. So we saw कि खवातीन की न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, क्योंकि अगर राशन कम है तो पहले प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा था कि मर्द खा ले, ठीक है. We saw कि we also heard a lot of gender-based violence cases, because again unfortunately हमारे माशरे में जब भी क्राइसिस आता है, जब भी प्रेशर मर्दों पे आता है तो वो वायलेंस के फॉर्म में निकलता है, whether it's you know whether this is sexual gender-based violence or other forms of gender-based violence. Apart from this, what we also saw is in pockets we saw women leadership from within these affected communities. You know, there were women, क्योंकि हर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ एक्टिव खवातीन दिखेंगी who are known कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती हैं. तो इन्हीं खवातीन ने हमें हेल्प भी किया in organizing those menstrual health drives. So you know there are so many lessons that we can learn. And I don't know if you'll come to this question later on, but I quickly want to add that हमारे पास ना data driven काम बहुत कम होता है, right? So the government, I don't know, I highly doubt if there's been a study on climate crisis response अभी जो हमारे floods हुए हैं, right? There is a huge need for the government or for some authoritative organization to conduct a study कि कैसा रिस्पॉन्स था और गैप्स कहाँ हैं, क्योंकि डॉक्टर फजलदा वाज मेंशनिंग कि ये और आएंगे, ये और हम देखेंगे और फ्लड्स अनफॉर्चुनेटली हम देखेंगे. एंड विच आई ऑल्सो डाउट कि हो सकता है हमारी पॉलिटिकल विल भी नहीं है वो कि हम वो करें, बट देर इज़ यू नो देर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन कंडक्टिंग दिस स्टडी. बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम डेटा कलेक्ट करें कि कैसे वो रिस्पॉन्स था और जेंडर को उसमें इंटीग्रेट करें कि व्हाट आर सम actions that can be taken to safeguard, you know, girls, women, children in future climate crisis. Absolutely. So let me throw that to Fazilda. With the Indus initiative, is there a portion of it which is about collecting data from the 2022 and maybe the 2010 crises and incorporating that into the interventions? Okay. So the Indus initiative is currently at you know a feasibility stage. So the Indus initiative was, as you can imagine, just launched. But there are other mechanisms with the government. For instance, the Ministry of Planning conducted the post-disaster needs assessment, in which they assess the damage to different sectors and the need for assess the monetary and other needs for reconstruction and rehabilitation. With that also, with the post-disaster needs assessment and the rehabilitation efforts that followed, the major problem was, as Aisha has mentioned, gender, and probably it was because the scale of the crisis was so formidable, it was just huge.
that gender almost always came as an afterthought, you know, to be included. There were, you know, surveys and assessments that were done afterwards, and but there hasn't been a concerted effort to find out or to analyze the gendered effects of the climate crisis, not just with respect to the floods, but you know, we know that the floods came at the heels of a very prolonged drought. The floods, the droughts, the forest fires. There is a need to focus on the gendered effects of the climate crisis. इस पे डेटा बहुत कम है. For instance, अभी फ्लड्स के बाद हमें ये जो डेटा सामने आता है ऑन अ मैक्रो लेवल, हमें ये पता लगा कि तकरीबन 1.2 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे 6 से 11 साल की उम्र तक they will not be attending school, you know, post floods, for various reasons. Now, this is one statistic. Now think about what the effect it has on girls, right? Girls, it means, you know, forced marriages, early marriages, gender-based violence. Gender-based violence के cases और early marriages के cases, the UNFPA estimates कि तकरीबन 6.5 लाख बच्चियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, they will be exposed to gender-based violence. इसी तरह, you know, these are again estimates, but about 1.5 million households as a result of the same survey are without water and sanitation. Now, at a household level, these many households are without water and sanitation. Like, think about what it means for women. Women are in household spaces managing. They are really your water and solid waste managers at home, right? They're close, very close to the natural environment, whether inside of the house or outside of it. They have a very close relationship to nature. तो इसका impact औरतों पे ज़्यादा आता है. You know, wash facilities, जैसे कि आयशा ने कहा, that direct impact, you know, lack of access to wash has a very direct impact on women, much greater, disproportionate impact on women, much more than men. Absolutely. So, Hira, I want to draw you into this aspect. First of all, data collection. Are there technologies which help with this data collection in the aftermath of a crisis like this? And also, have you seen women respond to the need to actually document the responses of their communities? See, Marine, the thing is that we're not a data-driven nation per se. जो हमें डेटा की वैल्यू समझ नहीं आती है. But having said that, ये चीज़ें देखते हुए जिन पॉकेट्स में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर जो लड़कियाँ काम कर रही हैं वो they do maintain, but it will be small communities, you know, and फिर उस लेवल पे very rarely अगर somebody has done a PhD or somebody is studying at that level जहाँ पर वो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी भी even undergraduate के लिए चले गए हैं. So that means that that population is very, very small. But yes, I think like we need to be educated about climate awareness. उसी तरह से हमें data की importance क्यों है ये लेने की ज़रूरत है. तो अभी you know, I always feel कि जो हमारे बच्चे हैं या young लोग किसी international forum पे जाते हैं, even जो लड़कियाँ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो जाके अपनी pitches करती हैं कि international audience के सामने, फंसती किस जगह पर है. The kind of statistics जो बाकी साउथ एशिया से लोग इकट्ठे कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी सारी है, इट्स नॉट लाइक नहीं है. सबसे दुनिया के बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यहाँ से बन रहे हैं. जीनियस किड्स सिटिंग इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड यू नो डूइंग कोडिंग, फ्रीलांसिंग. सो वी डोंट हैव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कमी नहीं है. कमी किस चीज़ की है? टू सपोर्ट देम, टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम, टू ब्रिंग इट आउट, यू नो, एंड टू ब्रिंग दैट on the mainframe, जहाँ पर उनको exposure दिया जाए, उनको opportunity दिया जाए, and I think that is really what sets us behind. But if we look at the brain and the heart, it's all there, right? How do we support them? So, right, I like that. The brain and the heart are there. It's just the data collection. So, Ms. Wazir, how did you document your responses
एंड हाउ शुड डेटा बी कलेक्टेड? कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत असिस्ट कर सकती है या लोगों को खुद से अपने रिकॉर्ड्स एक कम्युनिटी के तौर पे बनाने चाहिए कि भाई हमने ये किया था जब सैलाब आया था? आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम देखिए, डेटा कलेक्शन के बारे में मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जी डेटा कलेक्ट किया है। हमारी जब पोस्ट फ्लड्स की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई तो हमने असेसमेंट की अपनी फ्लड डैमेजेस की। उसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हमारे 32 मौजे इफ़ेक्ट हुए थे उसमें हमने डेटा बिल्कुल कलेक्ट किया है। जहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी और वहाँ से पानी जो है हमारी आबादी की तरफ आया है, बिल्कुल वो हमने रिकॉर्डेड की हैं। हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो है उस पर PC1 बनाए हुए हैं, अप्रूवल के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गए हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारी बहुत सारी ऐसी इंक्रोचमेंट्स थी हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में कि लोगों ने अपनी ज़मीनों को जो है वो प्रोटेक्शन वॉल के लिए वो नहीं दे रहे थे, दे वर रिलक्टेंट, वो हमें बनाने नहीं दे रहे थे, जिसमें लिटिगेशन के केसेस थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हाई कोर्ट ने उस पर भी काम किया है और हमें ये इजाज़त दी है कि आप जो है अभी ये जितने भी प्रोटेक्शन वॉल जहाँ से भी मिसिंग है, लोग इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे या अपनी सहूलत के लिए उन्होंने जो है प्रोटेक्शन वॉल को ब्रीच कर दिया है, तो उन तब पे जितने भी है हमने प्रॉपर जो है उसकी सर्वे भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो गया है। एक हमारी गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है कि ये जो प्रोटेक्शन वॉल है इससे ओवरफ्लो होती है, तो इसको अब हम रेस कर रहे हैं। इसको हम रेस करेंगे तो एटलीस्ट अभी जो हम तबाही से बचे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ना करे फिर भी हमारे सैलाब आएंगे तो उस पर जो है हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन उससे सेफ रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम डेटा कलेक्शन नहीं करते, बिल्कुल हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे हेल्थ में जो है हमारे BHUs जो हैं डिस्ट्रॉय हुए हैं, हमारी एजुकेशन के बाउंड्री वॉल जो है हमारी बच्चों लड़कियां जो हैं उनके स्कूल के बाउंड्री वॉल डैमेज हुए हैं, बिल्कुल हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये पूरी असेसमेंट जो रिपोर्ट होती है वो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवानी होती है और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब उसकी अप्रूवल देते हैं। लेकिन अगेन वो फाइनेंशियल जो है हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम पूरा जो है इस पे आइडियली हम उस पर सब पे काम कर लें और 100% जो है हमारी अचीवमेंट हो ताकि हम नेक्स्ट फ्लड्स को फेस ना कर सें। लेकिन वो जो है उसकी रिलीजेस भी जो है फेज़ वाइज आती हैं और थोड़ा थोड़ा हो कि जो फंड हमें डिस्ट्रिक्ट को मिलता है हम जितने भी वो हमारे मसले होते हैं उन पर हम काम करते हैं। लेकिन वही है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी होती नहीं है तो नेक्स्ट हमारे फ्लड्स आ जाते हैं और हम अपने पिछले जो है हमारे फ्लड्स के एम्बैंकमेंट्स या प्रोटेक्शन वॉल जो टूटी पड़ी होती हैं उस पर भी हमने काम नहीं किया होता। तो यही बात है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हमने जो असेसमेंट हमने अपनी रिपोर्ट जो जमा की है उस पर फौरी कार्रवाई हो और फौरी हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंटल काम शुरू हो सके। इसमें जो है पब्लिक प्रेशर का भी एक रोल होगा कि अगर पब्लिक प्रेशर डाले अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि भाई हमें ये चाहिए, ये काम करो, ये भी एक पहलू है। मैम पॉलिटिकल फिगर्स जितने भी हैं वो तो खुश होते हैं इस तरह के डेवलपमेंटल काम करने में, जाहिर है उन्होंने वोट जो है इन्हीं लोगों से वो लेते हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं लोगों के हैं। अगर वो प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए बनाते हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर की इसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमने अपना जो प्लान जमा किया होता है फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में कि वो फौरी हमें फ़ंड आए हो। हमारे महकमे इरीगेशन का महकमा है, हमारी जो है PDA में अभी हमारी 5 करोड़ की लाइबिलिटी अभी तक पड़ी है। जितने भी सैनिटेशन सर्विसेज हमने अपने नौशहरा में किए थे बहुत सारे केसेस अभी हैं कि लाइबिलिटी पड़ी है। लोगों के 475 घर जो हैं डैमेज हुए हैं, अभी तक उनको जो है कंपनसेशन नहीं मिली। यही वजह है कि फाइनेंशियली जब हमारी बात हो जाती है तो फाइनेंशियली हम इतने वीक हैं कि हम फौरी जो है इमीडिएटली उनको फंड्स नहीं दे सकते ताकि वो दोबारा अपने घर जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन इसमें मैं INGOs और NGOs का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पोस्ट फ्लड्स में हमारी गवर्नमेंट ने पूरी जो है मेहनत की है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारे पास जो है इतनी सहूलियतें नहीं थी कि हम 100% अपना दे सकें। उसमें हमारे पास जो है रेड क्रिसेंट के, WHO के और मुख्तलिफ़ किस्म के INGOs ने आके जो है हमारी हेल्प की है, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुश्किल वक्त में जो है उनकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। अच्छा, सो अब हम फाइनल क्वेश्चन पे आ रहे हैं इस सेशन के और ज़रा रैप अप करेंगे। अपने पैनलिस्ट से मैं पूछूंगी, एक आपने बड़ी चीज़ नोटिस की होगी, यकीनन किसी ने भी इस ऑडियंस में या आपके जानने वालों में कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा सड़क पे नहीं विटनेस किया होगा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। It's not an issue that we fight about. It's not an issue that we are aware of. Nobody quarrels about climate change because it's not important to us yet. हालांकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक इतना अहम मौजू है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे और जो स्लो ऑनसेट इवेंट्स होंगे उनसे उनकी ज़िंदगियां मुतासिर होंगी यकीनन।
So to wrap up, I'm going to ask each of the panelists, what advice would you give this audience in how to educate their children and how to make their children interested in issues of climate change? And what small role can people play on an everyday basis to help build climate change resilience within their communities or their workplace or their families? Aisha. I was hoping I'd be last, so I'll have time to think, but never mind. Oh, wow. So I think I would just suggest see where you have power to influence a certain system, a certain policy, or a certain structure. So for example, let's say if you were and again, because a lot of my experience is in the climate crisis response, I'll address this question accordingly. So for example, अगर आप floods के time पे या आपकी कोई affiliation है किसी organization से या आपकी किसी दोस्त की है या आप किसी को जानते हैं, so do please educate them about the gender vulnerability in climate crisis. कि ख़वातीन के जो मसले हैं या ख़वातीन पे जो impact है, that's very different than what men experience. And it's so important that we put that gender lens. If you are, let's say, part of an institution or government or otherwise, see if there is a system or policy that you can influence. Or if you have someone in your family who you think कि अच्छा ये किसी इदारे में है जहाँ पे हो सकता है एक छोटी सी system को अगर influence हो, तो I think besides, I'm sure my co-panelists will talk about the individual actions you can take, but I do want to say, see जो आपका इंडिविजुअल जो है पावर है वो आप कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू ट्रिगर अ ग्रेटर चेंज. एंड देन ऑन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अगेन इन द क्लाइमेट क्राइसिस रिस्पॉन्स वन थिंग जिस कॉज पे हम काम कर रहे थे उसको बहुत हार्म किया वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, where people were forwarding WhatsApp messages in misinformed narratives about menstrual health. And it was funny for me to see that a lot of men knew what are women's menstrual needs. So please, when you forward this information, क्योंकि काफ़ी ऐसे WhatsApp messages या videos चल रही थी कि ख़वातीन को तो पैड्स की ज़रूरत नहीं है, गांव की औरतें तो पैड्स इस्तेमाल नहीं करती, आप उन पे पैड्स क्यों थोप रहे हैं, जबकि ख़वातीन खुद हमें कह रही थी कि हमें पैड्स दें क्योंकि उनके पास वॉशिंग फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी. तो प्लीज़ जो भी ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है, प्लीज़ आप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. थैंक यू सो मच जी. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं हमारे मुल्क में. अच्छा, Fazilda, talking about education, including younger generations, does the Indus Initiative, Living Indus Initiative, have a portion where they're bringing in younger people? So climate literacy and a focus on the youth is a big part of the Living Indus plan. Pakistan has two forces, I'd say, that it needs to reckon with. One is its climate's vulnerability, and the other, which it can use to its advantage, is the youth bulge. And the Living Indus plan and the communication around it aims to focus on the youth and to leverage, and mobilize the youth, the young people of Pakistan, to work on climate mitigation, climate adaptation. इसके अंदर, and going back to what, going back to that question that you asked, what is it that you can do as a community, I'd say that the relationship between women and nature is very important, but even more important is, the relationship between women. Women who are women like myself, others out here in the audience who are working in the climate space, who are aware, and women who aren't. So indigenous women who live closer to vulnerable areas that are vulnerable to climate change, women who live in riverine communities, women who work with you, women who do not have the privilege to know what
you know, the various dimensions of the climate crisis, आप उन औरतों को educate करें. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि apart from there's a very heartening initiative in South Punjab. They've already included, they've been managed to include and incorporate climate literacy in the early years curriculum, which is a big win, right? And other provinces with under Living Indus, we're looking to do the same with other provinces. Aga Khan University ने एक बहुत प्यारा किताबचा छापा है जो कि अभी virtually available है. You can access it online, but it's for early years education, introducing children in the primary school to climate literacy. I'll end with something that's very powerful. अभी हमने data की बात की कि data नहीं है, data available नहीं है. You know, there's a lot of power in citizen science and in crowdsourcing. And this probably I'll direct to Hira also. I was meaning to ask her, कि crowdsourcing, so under Living Indus, what we want to do is enable ordinary citizens of the Indus to be able to upload information about the Indus. इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, यहाँ की water quality बिल्कुल नहीं अच्छी. You know, this is a mobile app that enables me to assess water quality using a smartphone. You know, things like that enable. हम क्यों इतने बड़े surveys का wait करें जबकि आजकल के दौर में technology does enable us to use citizen science to gather that information. That's a fantastic point. Yeah, citizen science, just like citizen reporting, कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते without your video being taken and sent off to some news channel or going viral on WhatsApp or Facebook. ऐसे why not citizen science, where citizens collect data, scientific data about the level of pollution in their area or any ecological damage that's being done to wildlife. That's wonderful. Hira, technologies helping people learn more about climate change? Absolutely. Your best friend is Google on most cases. There's a lot of knowledge, information available online. But जो चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगी, it's not just आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं. It's also about आप अपनी बेहसी किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं. Why is there so much challenge is because हम एक consumption economy में रहते हैं, right? I'm a business person, so the basic thing is आप लोग जब यहाँ से उठकर जाएंगे तो यहाँ पर अगले आने वाले देखेंगे कि बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें और बहुत सारी चीज़ें और रैपर्स पड़े हुए हैं. So जिस वक्त हम उठ के जा रहे हैं उस वक्त why aren't we picking this up and taking it to the trash cans and putting it in there? We have a fantastic team. यहाँ पर इरवर्दे वाले बैठे हैं. I'm naming them because they are one of the startups that I work with as well. They have volunteers who want to educate you about trash segregation and separation. How many of us are going to take time today to talk to them, listen to them, understand how these things are happening? और जब ये चीज़ें हम खुद समझेंगे as adults, that's when we can tell our kids, because अगर आप भिंडी नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे भी भिंडी नहीं खाएंगे, as simple as that. So yeah, how are we leading by example, and what are we really doing? And when your question about citizen science, I think वो ecosystem की जो हम बात कर रहे थे, आप जब ऐप बना के देंगे जो इतना आसान है कि लोग समझें उसको, उसकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है. Last Ministry of Climate Change previously put up this Clean Green Pakistan Index, और उन्होंने पोर्टल बनाया जहाँ पे लोग जाके सिटीज़ के अंदर अपना रिकॉर्ड कर सकते थे हाउ क्लीन द सिटीज़ आर. वेबसाइट इंग्लिश में थी. हाउ आर माई मैसेज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते. आई इनफैक्ट नीड अब जो एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि देर आर पीपल हु आर पुटिंग अप क्लाइमेट लिटरेसी एजुकेशन पोर्टल्स ऑनलाइन, जो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, वो उसको लोकल लैंग्वेजेस में, उर्दू में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इस मैसिव एफर्ट के लिए अगेन गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है. सो एग्जांपल ऑफ केपी इज their government is pushing this and they are already going to be implementing a plan of this sort, but we need the other provinces also to take a little bit of action. But then at the same time हमारी responsibility क्या है, because everything is consumer driven. जो हम advocate करेंगे वो आगे जाके होता है. Absolutely, a wonderful line to end on. हमारी responsibility क्या है? Every one of us in this audience is a consumer, and that means we have power. And we should exercise that consumer power to promote causes, companies, and organizations that are not just gender blind,
that look to women's needs, that address those needs, and that address environmental needs. So let me just wrap up by saying that if Assistant Deputy Commissioner Wazir can do it in a conservative tribal area, if Aisha can overcome taboos in Sindh, and if Fazilda can lead policy discussions and decisions at the provincial level, and Hira can empower women at the forefront of clean technologies, then you all, individually and as leaders of your family, can be advocates for change in building resilience for climate change in Pakistan. And with that, I'd like you to join me in thanking the panelists, Hira Wajahat, Fazilda Nabil, Assistant Commissioner Qurratul Ain Wazir, and Aisha Amin. And from me, Mehreen Khan, that's all for the opening session. Thank you all very much for your attention and for being part of this lovely scenic setting. I wish you a very, very successful WOW Festival, and thank you all. See you. Allah Hafiz. Thank you. A big thank you from us to all of our panelists and our moderator. अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे तकरीबन 10 मिनट की, ताकि हमारा स्टेज का सेटअप वो चेंज हो जाए. इसके बाद जो हमारे सेशंस हैं वो इन पैरेलल चलेंगे. तो यहाँ पर मेन स्टेज पर हमारी एक फिल्म स्क्रीनिंग होगी जिसका नाम है विद बेल्स ऑन हर फीट. स्क्रीनिंग के साथ एक Q&A भी होगा जो कामला हबीब मॉडरेट करेंगी हमारे लिए. जैस्मिन रूम में जो बिल्कुल आपके पीछे है, वहाँ पे एक पैनल सेशन होगा जिसका टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ ऑनलाइन. और पार्किंग लॉट में जो लॉबी के उस पार है एक ड्रम सर्कल चलेगा, जो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है. एक मदर डॉटर ड्यूओ हैं जो ये ड्रम सर्कल चलाएंगे. तो आप फैसला कर लें कि आपने कहाँ जाना है इस 10 मिनट की ब्रेक में. और इन चंद मिनट में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ हमारे ऑनगोइंग अट्रैक्शंस हैं इस फेस्टिवल की. तो जब भी आपको वक्त मिले आप ज़रूर वहाँ जाइएगा, ज़रूर उनको देखिएगा. तो अपर गार्डन में जो ये ट्रांसपेरेंट कमरा है ऑन माय लेफ़्ट, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रही है आप बीती के नाम से. और मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके लिए पढ़ लूँगी. आप बीती इज़ अ सेट ऑफ इंटरवोवन ऑडियो. Hi, this is Zoya Hassan, and I, along with my team members Maha Hassan and Sabi Ahmed, have written and directed this collection of short audio stories which are based on the recent floods that happened in Pakistan. And they sort of take you into the journey of what it feels like to have your perfectly mundane life interrupted by something so soothing and something so present as water. So I invite you all to come and experience this art installation and listen to all of these heartfelt audio stories in this art installation called Aap Beeti.
मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ, मैं कुल जहान की बानी हूँ।
सानू वेखन दे पैर सानू वेखन दे पैर सानू वेखन दे तेंडे पैर खिमण आसमानी नजर थी। वेलकम एवरीवन। हमारे इस सेशन का टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ ऑनलाइन। मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये एक अहम सेशन और ये अहम टॉपिक क्यों है, स्पेशली हमारी आजकल की दुनिया में, स्पेशली औरतों और लड़कियों के लिए जहाँ पे साइबर क्राइम इज़ रैम्पेंट और देयर इज़ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आउट देयर to support those who are a victim of cybercrime. And so we put together this fantastic panel of different voices ताकि आप इनसे ही सुन सकें कि आप किस तरह से अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं by way of support and by way of guidance. So I will just, with that, I will hand it over to our moderator for this session, Hira Basit. Please, Hira, over to you. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Sorry. Assalamu alaikum everyone. Thank you all for coming. मेरा नाम है हिरा बासित. मैं Digital Rights Foundation में काम करती हूँ. I'm the program manager for the cyber harassment helpline. So Pakistan में in this day and age, everybody has to be online, right? You have to have a phone. स्पेशली कोविड के बाद से सबकी रिक्वायरमेंट एक ज़रूरत बन गई है कि आपके पास फ़ोन हो, आप ऑनलाइन हो, आपके पास खाना ऑर्डर करने से लेके अगर आपने कोई राइड बुक करानी है, अगर आपकी कोई कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने पढ़ाई करनी है, ज़रूरत बन गई हुई है कि ज़रूरत बन गई हुई है कि आप ऑनलाइन हो। लेकिन इट फील्स के अब जो है ना, हमें इस सिचुएशन में ऑनलाइन होने में हमें we've just been thrown into that. हमें कह दिया हुआ है कि go out, go use the internet, go use all these apps और ये फ़ोन ऑन करो, लेकिन किसी ने हमें ठीक से बताया नहीं हुआ कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो और क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं, क्या क्या स्कैम्स, क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं। सो लाइक आई सेड, आई एम द मैनेजर फॉर द साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन और पिछले 6 सालों में we've had about 14,000 cases of online harassment that were reported to us. इस सब में online stalking की बात होती है, blackmailing की, threats की, fake profiles, impersonations की, but we've noticed कि over the past year or so, financial frauds की भी cases बहुत हद तक बढ़ चुके हुए हैं. I think, and this goes, so there's no clear indication कि जी this सिर्फ औरतें या सिर्फ मर्द या सिर्फ बच्चे इनके victims होते हैं. This goes all across the board. So we have our 2 experts here, each experts professionals in their own fields, and I will also pitch in my experience running the helpline कि यहाँ पे exactly क्या-क्या हमें problems face होते हैं, especially for young girls, especially for young women who have started using online platforms to really make a strong presence for themselves, especially for women entrepreneurs. You see young girls in this age doing so many businesses online. या तो वो पढ़ा रही हैं, tuitions दे रही हैं, they're running their cooking की वो classes भी दे रही हैं, but they're also running their home chef business, baking की businesses, कपड़ों के, jewelry के, you God knows what. But again, so we want to know exactly कि problems क्या face आती हैं, what scams and what frauds are there, because जितना ही आप एक platform को ज़्यादा use करना शुरू करते हो, वहाँ पे आपके जो offline जो आपके scams होते हैं, वही they start to infiltrate into the online world as well. So I'm going to pass on the mic. I'm going to pose you guys a question. कि in your own experience, आपने क्या क्या देखा है in your personal lives and in your professional life कि किस तरह के scams, किस तरह के frauds आ रहे हैं, and why do you think the people who fell victim to those, why did they fall victim?
सो उनके क्या वो गैप्स थे जहाँ पे उनने देखा नहीं, उनने सोचा नहीं, ये कहाँ पे, why did they were they vulnerable to these things? So Dr. Saika, please, over to you first. Can you introduce yourself, please? Yeah. Thank you very much, Hira. I'm Dr. Saika Imtiaz Asif. Currently, I'm working as Vice Chancellor, the Government Sadiq College Women's University, Bahawalpur. And it was in January, a girl walked in my office. She had a stricken expression in her eyes. The reason I focused on her eyes was that she was wearing a mask and she really looked scared. And she said that somebody is blackmailing me on phone and I'm really scared and I just don't know what to do. So I asked her to relax, and then she said that she said in December, a WhatsApp group was formed. We all know that October is the month of breast health awareness, breast cancer awareness. And another soft point for the girls is the scholarships as well, because there are different kinds of scholarships and students want them. So she said that in December, several WhatsApp groups were formed, groups for scholarships and group for breast cancer awareness. And she said in that there was a person with the name of Dr. Khamsa, and she said that if any one of you has any problem, you just contact me, tell me about the symptoms and all, and I'll give you professional advice. This girl has had some gynae issues, so she contacted the doctor, and the doctor asked her to send the pictures of her private parts. She said that I would like to examine, and without looking at those pictures, I won't be able to diagnose the problem. And then the girl sent those pictures to her, but then that person said, no, I want you to make videos like this and send pictures like this, pictures of your breast with your face and all that kind of a thing. And after she sent those pictures, the person said that I'm a man and I want you to come and see me and I'll meet you there and all. And he started blackmailing her. And then he also sent her the numbers her phone number was registered on her father's name. And he sent all the numbers that were registered on her father's name. And he said that, do you want me to send to make these pictures viral, and do you want me to send these pictures to your father? She got really scared and she contacted me. We had heard about women protection and in police stations and all, so we contacted them. They said it's a cybercrime thing and the privacy may not be ensured, so you'll have to contact the cybercrime wing of FIA. She gave somebody's number, the police station, the police officer gave somebody's number. They, we called them and they said that you'll have to send this online application. We did that, but we were told that it's going to take days for them to notice this application. This will be in a queue and you'll have to go to Multan to register the case. So with this chief security officer and 2 faculty members, I sent that girl, they composed an application and all. Again, she went and then, and those people said that we'll have to make a raid or uske baad ye hai ki then we'll be able to capture the guy. They came the 3rd day, the girl said, okay, come at this designated place, and they captured him, they arrested him. The girl had to go again. Again, I sent the chief security officer and the faculty members with her. They registered a case. But after a couple of days, the girl said that my father doesn't want me to pursue the case. And then, and the guy, the phone, when the police had his phone, what they saw were that there were 3,500 pictures and videos of different girls, and the criminal had identified them with their names and educational institution,
and he had made several WhatsApp groups with, he had 4 IDs and he was using 4 SIMs for those IDs. So in his wallet also, there was a blank check signed by a girl of a bank where the scholarships are deposited for the students. So this was it. And when the girl said that I don't want to pursue the case, she had to appear before the court. And then the court said that the judge talked to her in private. He said that he asked her if she was being pressurized by the educational institution. She said, no, but my family doesn't want me to pursue the case. And then the judge, because otherwise this crime is unbailable, and the judge, of course, gave him a bail the next day. Okay. So thank you for sharing that story. I'm sure that, as someone who feels responsible for all your students, and I can see that you deeply care about your students. So thank you. It must have been hard to go through that entire process and give support, because लोग इस तरह usually support नहीं करते. अगर हम देखा जाए अपने helpline के experience में भी, हमारे जो teachers, professors या हमारे boss जो वो they in turn they victim blame you. कि again जो the people that are around us say कि अच्छा ये इसी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना. नहीं, I feel in such cases तो one shouldn't think twice. दूसरी दफा तो सोचना ही नहीं चाहिए ना. We have to support them बस. Yeah. So it's as simple as that. The second part of my question was, why do you think your student or like people in general, women in general, वो क्यों इन तरह के scams or frauds or even जिस तरह की requests में, why do they fall for these? क्या हमारी कोई awareness में problem है, हमें educate नहीं किया जाता, या हमें सही से technology, या what do you think? देखिए ना, ये वीक एरियाज है ना, मतलब सॉफ्ट उनके टारगेट्स हैं. बिकॉज अक्टूबर के मंथ में जाहिर है, एंड इतना ब्रेस्ट कैंसर इज अ किलर, आई मीन. और उसके बाद ये है कि इन साउथ एशिया हमारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है. तो अब उसमें somebody sees this opportunity. सबसे पहले हेल्थ की फैसिलिटी, दैट गर्ल्स फैमिली लिव्स इन विलेज. If she had a problem, जाहिर है उसने कहा कि this is an opportunity. और कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी फ़ोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लास के बने होते हैं, स्टूडेंट्स के बने होते हैं, और वो सारी चीज़ें. और उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप्स भी, फाइनेंशियल इश्यूज़, नेचुरली बहुत से स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह के एरियाज़ हैं. बट ड्यूरिंग दिस कोर्स मैंने तो बहुत ब्रीफली बताया जो हमें a number of problems that we faced. Shall I tell? Sure. अब देखें FIA के ऑफिस में when that girl went, the guy said that the person in charge said that we have got 13,500 cases, such cases registered in our station. अब 13,500 cases को उसके कितना वो परसू कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने फर्स्ट डे कहा कि एप्लीकेशन हमने कंपोज करानी है, ओके आप इनको लिखवा दें, और उस बच्ची के फ़ोन से डेटा लेके हम लोगों ने करना है, उसको भी प्रिंट करना है. एंड देन दे आस्क्ड फॉर 4,000 रुपीज़ जो कि कॉस्ट आई. तो हमने कहा कंपोज़र आपके नहीं है. उन्होंने कहा नहीं, हमने आउटसोर्स किए हुए ये प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं जो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं. और I think I think you're going towards my second question, so I'm gonna, stop you right here. But I'm gonna pass the same question on to you, Anushe. Please introduce yourself, and what kind of, because आप financial fintech world में you are that voice for us here. तो financial frauds भी, like I said, over the past year or so, especially मैंने अपने experience में देखा कि बहुत ज़्यादा rise हुए हैं. And we were talking about the apps too earlier. So please, आप बताएं कि आपने क्या-क्या देखा है, and why do you think people are falling vulnerable to these? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनुषा नवीद अशरफ है. मैं एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी उड़ान के साथ काम करती हूँ, और हम वुमेन के फाइनेंशियल एक्सेस और एम्पावरमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक डॉक्टर साइका ने बड़ी
विविड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हरासमेंट की होती हैं या डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की होती हैं, पर वहाँ से भी एक पहलू जो है कुछ ना कुछ फाइनेंसेस की तरफ आ रहा था। पर कुछ फॉर्मल सेक्टर में भी अब हम बहुत से फ्रॉड्स वगैरह देख रहे हैं। मैं क्योंकि कमिटीज़ या बीसीज़ अगर आपको पता हो उस अरीना में काम करती हूँ, तो आई टेक एन एग्जांपल वहाँ से। सबसे पहले आई थिंक पिछले दिनों काफ़ी एक बड़ा दिसंबर में बहुत बड़ा फ्रॉड का कमिटी फ्रॉड का केस हुआ था, शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी हो, बट जस्ट टू गो वेरी ब्रीफली ओवर इट, एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर थी, कमिटी वाली बाजी थी, जो कि जिन्होंने स्टार्ट आई थिंक छोटा किया और बाय द टाइम दिसंबर में उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन थे। वो 42 करोड़ ऑफ वेरी हार्ड अर्न मनी दैट वुमेन वर सेविंग, वो सब डिफ़ॉल्ट कर गए उस पर, वो मैनेज ही नहीं कर पाए। और बहुत से लोग उस पहलू में आए सामने, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ की कि कहाँ पे एक लाइफस्टाइल और मिसमैनेजमेंट और कोई रिसीट्स नहीं थी, कोई ट्रांजैक्शंस की ट्रेल नहीं था। तो रिड्रेसल का भी जो कुछ हुआ, केसेस वगैरह हुए, बट उनमें कुछ उस तरह से प्रूव नहीं हो पाया। तो एक तो ये एग्जांपल कमेटियों में से ही फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह की देखी जा सकती है। मैंने उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया, और माइक्रो फाइनेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अक्सर कि औरतों को पता भी नहीं होता उनका CNIC किसके हाथ में है। उनको पता भी नहीं होता कि ये मेरा CNIC किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, या फोटोकॉपी या कुछ भी। और कभी तो ऐसा होता है कि उनके ऑब्वियसली घर में ही उनके हस्बैंड्स या समबडी एल्स, फादर्स और ब्रदर्स, ऐसा होता है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का एक वुमेन इंक्लूजन का बड़ा प्रोमिनेंट मिशन था, तो वो CNICs वो लेके उनके नाम पे लोन निकलवा लेते थे, और उन औरतों को पता भी नहीं होती थी, खबर भी नहीं होती थी कि मेरे नाम पे एक लोन चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी, और कभी बार वो वापस आती थी, और उनको जब बैंक्स रिकवरी के लिए पहुंचते थे तो कहती थी मुझे इसका इल्म ही नहीं है। एक तो ये होता है, कभी बार ऐसे भी होता है हम बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारी कम्युनिटीज़ में कुछ लोगों को, जिनको हम सोचे समझे बगैर अपनी CNICs दे देते हैं। तो वो मोहल्ले में कुछ कह लें कम्युनिटी लीडर्स ऐसी औरतें होती थी जिनको आई थिंक एक्टिविस्ट कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस की, उसमें वो अपने आप को एक्टिविस्ट के तौर पे वो करती हैं, और वो जो है वो जाके कोई 10-12 औरतों की जाके CNICs दे देती हैं और उस पर लोन निकलवा लेती हैं, और फिर लोन लेके कभी कभार गायब भी हो जाती हैं। पर उनके नाम पे क्योंकि लोन नहीं होता, तो जो औरतें फंसी हैं जिनको पता भी नहीं था उनका CNIC किस लिए यूज़ हो रहा है, वो उधर आ जाती हैं। सो इस किस्म के काफ़ी केसेस लाइक अगर हम फ्रॉड के करें, आजकल बहुत एक ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लेंडिंग एप्स हैं। सो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी एक्चुअली, पर कुछ ऐसी लेंडिंग एप्स हैं जो प्रेडेटरी टर्म्स पे आपके से लोन ले लेती हैं, पर वो ना SECP रजिस्टर्ड हैं, ना उनके पास लाइसेंस है। बहुत से लोग जो है इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो एक्चुअली बहुत चाहते हैं कि इस किस्म की उनको इजी कैश या फाइनेंसेस मिल जाएं। इस वक्त बहुत मुश्किल है लोगों के लिए गुजारा करना, पर वो फिर इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे या आपके इतने कॉन्टैक्ट्स और इतनी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो फिर जाके सबको पिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके सब ख़ानदान में, दोस्तों में थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे होते हैं, आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे होते हैं। इनकी कुछ गैप्स ऐसे ये हैं, और उसमें कुछ रिड्रेसल शुरू हो गया, जो आपका दूसरा पहलू था सवाल का। आई थिंक कल ही की न्यूज़ थी कि गूगल जो है वो SECP के साथ, PTA के साथ, इस किस्म की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो लाइसेंस नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है ऐप्स, वो ऑनलाइन हो ही ना सकें, ऐप स्टोर्स पे मौजूद ही ना हो सकें। पर जहाँ तक गैप्स की बात होती है, आई थिंक कुछ मैंने पहले ये कहा कि हमें शायद फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस में इतनी पीछे रख दिया जाता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे क्या टूल्स या क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से यूज़ हो सकती है। हम जब डिजिटल से अब दुनिया बाहर नहीं निकल सकती, लाइक एवरीथिंग इज़ डिजिटल। सो
हम पर जिस तरह से डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उस पर क्या इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे हमारे बारे में मौजूद होती हैं, हमें कभी बार रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये किस तरह से कनेक्शन फॉर्म कर सकती हैं. लाइक यू नो डॉक्टर साइका की एग्जांपल में किसी को कैसे पता चलता है कि आपके इमीडिएट नेटवर्क में या एक वंस रिमूव नेटवर्क में फ्रेंड्स कौन हैं, किनके साथ आप जो है वो आपका रिश्तेदारी है, या ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी डोंट नो कि हम किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड समटाइम्स वी रिवीलिंग टू मच. जो है लगता है मैं भी बहुत डरती थी फाइनेंशियल टर्म्स में टिल माई स्टार्टेड वर्किंग इन द बैंकिंग टर्म्स. हमें शुरू से ही बता देता है कि women are not money savvy and you may make a bad decision, so trust the men around you, and often times money is used as a tool of control. So ऐसा होता है क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हम फाइनेंशियली किधर स्टैंड कर रहे हैं और किस तरह से हमारे यू नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काम करनी चाहिए, या कहाँ हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना चाहिए. तो अक्सर हम इस किस्म के फ्रॉडुलेंट ट्रैप्स में फंस जाते हैं, एंड समटाइम्स इट्स द पीपल क्लोजेस्ट टू अस दैट आर डूइंग इट. फॉर्मेलिटी, कोई रिसीट्स नहीं होती. हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, पर कभी कभार हम अपनी रिसर्च और होमवर्क नहीं कर रहे हैं कि किसी को हम अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या उसकी रिसीट है मेरे पास, कोई रिड्रेसल की एक्चुअली कॉपी है कि मैं कह सकूं कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, या ये चीज़ एक्चुअली मेरे पास प्रूफ है. So I think these are some of the ways, and I'll let you continue with the next questions, and I'm sure we can go into. No, that reminds me because हमें भी काफ़ी cases आते हैं. So the loan apps, particularly वो helpline पे काफ़ी वो, because again cyber crimes go to the FIA, तो वो थोड़ी confusion भी हो जाती है. अच्छा ये FIA में जाएंगे, रिपोर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, वो ये केस लेंगे कि नहीं. But you also mentioned कि जी वो आपके ऐप एक दफ़ा now once you download the app, so I think one of the things is कि हम जो है जो प्राइवेसी पॉलिसी हैं या जो हम परमिशंस देते हैं ऐप्स को, वो हम नहीं पढ़ते. सो इवन फॉर बिगर ऐप जैसे फेसबुक वगैरह, वी जस्ट हमसे अग्री टू ऑल, यस आई रेड एंड एक्सेप्टेड योर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं. सो दे कैन टेक्निकली से कि हमने तो आपसे परमिशन ली थी, यू साइंड ऑफ. सो व्हाट दे डू, व्हाट दीज ऐप्स डू इज दे गेन एक्सेस आपकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में और आपकी गैलरी फ़ोन में जो आपकी गैलरी होती है. नाउ दे हैव एक्सेस. तो आपने लोन पे बैक कर दिया हुआ है, नहीं किया हुआ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज उनका जो मकसद है, द होल एम ऑफ दोज एप्स इज़ टू कंटिन्यू गेटिंग मनी फ्रॉम यू. सो अगेन लाइक यू मैंशन हाई इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन आपने लेट्स से आपने 5,000 का लोन लिया, 10,000 का लिया, यू माइट हैव पेड ऑफ द लोन्स, लेकिन नाउ दे वांट मोर, वो और चाहते हैं. सो नाउ दे आर कॉन्टैक्टिंग योर रिलेटिव्स, आपके यू नो एक्सटेंडेड फैमिली कि अच्छा दिस पर्सन ओज मी मनी, यू नो ट्राइंग टू डिफेम यू इस तरह से. या फिर बिकॉज दे हैव एक्सेस टू योर गैलरी, तो वो पिक्चर्स सॉर्ट ऑफ एडिट करना शुरू कर देते हैं. या फिर दे थ्रेटनिंग, दे सेंड दोज पिक्चर टू यू वेदर इट्स आपकी द पिक्चर एज इट इज़, या फिर वो एडिट करके भी. वी रिसेंटली दिस वीक वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वुमन who said कि now those people from those apps are messaging me, they edited my face on top of a nude picture, and they're messaging me कि जी मैं आपके आगे family वगैरह, I have their numbers, so now I'm going to send them if you don't pay me back my money soon. So again, so ये कि हम एक तो हमने पढ़े बगैर हमने you know we signed off our rights, our permissions, जो भी कहने, but also कभी कभार यू डोंट इवन नो. आई थिंक वो ट्रस्ट का भी वो इशू आ जाता है कि इफ़ इट्स एन ऑनलाइन बिजनेस, लेट्स से यू नो यू सी an online store on Instagram or something, and then you buy something off of them, you've paid for it, and that product comes. उसमें तो आप you're like मैं क्या ही कर सकता था, you know, for because the only thing that you can do there is trust the other person, right? इस मेरे माइंड में एटलीस्ट वो नहीं आता कि क्वेश्चन कि oh where could I have been smarter, क्या मैंने कोई गलती की थी जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा हो गया. सो दीज आर क्वेश्चंस वेयर यू, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्पेस राइट नाउ. एंड आई नो माई क्वेश्चन जो मैं पोज कर रही हूँ कि जी वाई वर दीज पीपल वल्नरेबल, इट कम्स ऑफ अक्रॉस एज अ लिटिल विक्टिम ब्लेमी, बट द थिंग इज़ कि वो दोनों साइड से होता है, राइट? द परपेट्रेटर्स और ऑल्सो द वंस हु आर डूइंग दिस, लेकिन हमें भी एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. बट मूविंग ऑन, आपके एक्सपीरियंस में, आप दोनों के एक्सपीरियंस में, जब ये चीज़ें आगे जाके रिपोर्ट हुई,
to the authorities, to the state authorities or to your school or like other educational institutions as well. तो वहाँ पे क्या क्या problems आती हैं? So उसकी investigation में उस criminal को, perpetrator को पकड़ने में क्या problems आती हैं? उनको trace करने में और etc. और फिर finally उनकी punishment में क्या वो gaps हैं? क्या हमारे पास resources कम हैं या फिर tech का मसला है जहाँ पे हम उनको track नहीं कर पाते? Like what are the patterns that you guys have noticed? रिसोर्सेज का यस, गवर्नमेंट के पार्ट पे भी रिसोर्सेज कम हैं और हम लोगों का सोशल सेटअप इस तरह का है. फॉर एग्जांपल टेकिंग दिस केस, दैट स्टूडेंट हैड द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. पूरे साउथ पंजाब में सिर्फ एक ऑफिस है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का. अ गर्ल सिटिंग इन राजनपुर, वो 7 घंटे सफ़र करके क्या अकेली आएगी रिपोर्ट करने के लिए? एंड वी वर टोल्ड कि शी हैज़ टू कम, उसको पर्सनली जाना होगा. अब वो अकेली आएगी और 3 दफ़ा और हर हेयरिंग में आना होगा उसको, इफ़ शी डिसाइड्स टू गो अहेड विद द केस एंड ऑल, और उसको लॉयर भी हायर करना होगा. तो ये ऐसी चीज़ें हैं. लाइक एक दफ़ा वो गई रिपोर्ट कराया, उसके बाद शी वेंट बैक. फिर उन्होंने व्हेन दे अरेस्टेड हिम अगेन, मैंने कहीं से कहलवाया कि आप प्लीज़ रेड करें. दे चार्ज्ड अस फॉर द रेड, वी पेड फॉर इट बिकॉज अगेन गाड़ियाँ उनके पास, दे सेड गाड़ी है, पेट्रोल हमें नहीं दिया हुआ. हमारे पास कोई कंपोजर नहीं है हु कैन कंपोज द एप्लीकेशन फॉर द गर्ल. They had no composer. They can't meet the expense of the raid. For example, any place which is 7 hours away from Multan, the party or the FIA people have to go for the raid. They would drive for 7 hours and nobody would meet the expenses. They don't have the resources. और सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लड़की अकेली पहुँचेगी. Would she dare go there and all that? उसके बाद ये है कि 2-3 दफ़ा तो उसने पेरेंट्स को भी नहीं बताया ना. और इफ़ शी इज़ लिविंग एट होम विद हर पेरेंट्स, वो कैसे अपनी एब्सेंस जस्टिफाई करेगी? रेड हुआ, द गाय वॉज कैप्चर्ड, शी हैड टू गो अगेन FIR के लिए. दोबारा अगेन यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर 2 फैकल्टी मेंबर्स गए. एंड देन दे सेड आप सोच लें आप क्या परसू करेंगी केस, ओनली देन विल राइट एन FIR एंड ऑल. और उसके बाद आफ्टर 2 days FIR हो गई. द गर्ल बैक्ड आउट. शी सेड माई फादर डजंट वांट मी टू परसू दिस केस. वी सेड ओके, हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन देते हैं कि दिस पर्सन हैज़ कमिटेड अ हिनस क्राइम एंड ही इज़ ब्लैकमेलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, बिकॉज उसके फ़ोन में एविडेंस है. बट वी वर टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा केस वीक होगा. विक्टिम्स को आगे आना पड़ेगा. they'll have to testify against him, they'll have to identify the data and all, and nobody was willing. So that means that all these things are there. And then she had to appear before the court as well. How many girls would go and do that? ये सारे flaws हैं, ये सारे gaps हैं. We talk about women empowerment, we talk about making the laws, but law बना दें, what about their implementation? If the, offense is non-bailable, the evidence is all there in his phone, even then victims have to testify, they have to pursue the case. And in, I think 99% cases, they don't. Thank you. So I think you've identified like 2-3 major problems here, right? एक तो ये है कि report करने के लिए ही you have to travel. And if अगर FIA या cyber crime wing जो है वो आपके city में नहीं है, तो you might have to travel anywhere between 2 hours to 5-7 hours possibly, depending on what your closest wing is. So एक तो ये उसमें आपकी travel. Not just once, several times you have to go. And if the case is registered on each hearing as well. And we actually, we talked to a lawyer, we said, okay, we want to pursue the case even if the girl backs out. She said, okay, no, we'll ask for her protection and all, persuade the victim,
and I'll charge 1.5 million. I mean, neither the girl nor the university could pay 15 lakh to the lawyer. So these are the things, I mean, who would meet such expenses? Yeah. So traveling में ये आ जाता है कि जी आपके पास travel cost है, obviously. फिर because these are young girls, 19, 20, that's the same age group that we cater to as well. I think हमारे पास जो सबसे ज़्यादा cases आते हैं वो आते हैं from age 18 to 30, 35. So young women, again, जो कि और उनकी intimate pictures के बारे में बात हो रही है, sexually explicit pictures के बारे में बात हो रही है. These are not something that you want to bring in front of your family, because again victim blaming होती है, honor, इज्जत की बात आ जाती है and everything, and your parents, your family, even अगर वो accepting हो भी, अगर वो supportive हो भी, लेकिन वो सोचना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा लोग क्या कहेंगे, वो society की हमेशा बात आ जाती है. So they might have to travel alone. एक तो वैसे ही हमारे वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता लड़कियों को कि अच्छा वो अकेले जाके कुछ करें, बाज़ार तक तो जाने नहीं देते. Then you've mentioned कि अच्छा बार बार आपको वो जाना पड़ेगा, so it's not, फिर प्राइवेसी की भी I'm sure उनकी कंसर्न होगी कि अच्छा because that's something that people at the helpline speak about to us the most, कि कहीं मेरे घर वालों को ना पता चल जाए, कहीं मीडिया में बात ना आ जाए, मीडिया में बात, बिकॉज हमारी इमेज ही बनी हुई है कि जी पुलिस में एक दफ़ा आप केस कराओ तो मीडिया में आपका केस नाम भी चला जाएगा, फेस भी आ जाएगा, योर इंटायर स्टोरी. तो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के भी कंसर्न्स होते हैं. एंड यू मैंशन कि कोर्ट तक अगर बात लेके जाएं, सो अगर कोर्ट तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो दैट बिकम्स पब्लिक रिकॉर्ड. और वो जो पिक्चर्स जो वो छुपाना चाह रही थी, जो वो चाह रही थी कि वो पब्लिक रिकॉर्ड ना, या वो कहीं वायरल ना हो जाएं, या वो किसी उसकी फैमिली तक ना पहुंच जाएं, इस दे आर दोज पिक्चर्स बिकम पार्ट ऑफ योर एविडेंस, और वो एविडेंस जो है बिकॉज ऑफ देयर कोर्ट में है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड वैसे ही बन गया. सो द होल पॉइंट of doing that case, वो तो थोड़ा null हो गया, right? कि आप चाह रहे थे कि pictures ना छुपे and eventually they go out. और इस केस में unfortunately criminal is a lawyer and his father is also a lawyer, and they have the backing of the bar council and all. So they would have, I mean, the girl's safety was at stake as well. Definitely. I mean, the girls won't go alone to the court and pursue such cases. You also mentioned कि आपके पास legal recourse नहीं था. So that is also a problem. So transport, money and legal recourse, no one really knows how to fight these things. और आपको pro bono या even something affordable legal representation नहीं मिल रही थी. But we'll move on to Anusha. Like आपके experience में, sorry, I'll just let you take it. For sure. So I think कि बहुत से ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम्स पे भी कहें, बहुत से इश्यूज काफ़ी ओवरलैप करते हैं, बहुत सी रीजंस काफ़ी ओवरलैप करते हैं. पर वन ऑफ द थिंग्स के जो इससे भी शायद एक स्टेप पहले आता है, ना गवर्नमेंट बॉडीज़ को ना इंसान को खुद पता होता है कि हु इज़ द राइट बॉडी और हु इज़ द राइट अथॉरिटी टू गो टू. क्योंकि अगेन हम बहुत से इस किस्म के कर रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेसेस के बारे में कर रहे हैं, किसके अंडर आते हैं, कौन इस किस्म की चीज़ों को हैंडल करेगा. अगर अनरजिस्टर्ड एप्स हैं या बिजनेसेस हैं तो उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, तो वो वहाँ पे ही रिकोर्स. सो अक्सर इस किस्म की जब, एंड आई एम श्योर यू माइट बी अ लॉट मोर अवेयर बिकॉज हेल्पलाइन पे आती होंगी इस तरह से, कि कौन है जिसको हम जाके रिपोर्ट भी कर सकें, जो इसको हैंडल भी करेगा. that's one of the primary issues that I don't think the people themselves, those organizations themselves know. पुलिस वाले FIA के पास भेजे होते हैं, FIA वाले पुलिस के पास भेजे होते हैं, कोई कहेगा कि PTA का केस है, कोई it's constant shuffling. Nobody knows. And unfortunately it exhausts the person to a point कि मैं redressal चाहती भी हूँ या नहीं, या मुझे मिल भी सकता है या नहीं. So I think इस किस्म की होती है. फिर स्पेशली जब आप फाइनेंशियल किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, बहुत सा बर्डन ऑफ लाइक कि आपके पास रसीदें थी, इनवॉइसें थी, अगर आपने बिल्कुल कैश में वो डील किया है तो आप ये भी नहीं ट्रैक कर सकते कि अच्छा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं. इनफॉर्मली बहुत सी ये चीज़ें हो रही होती हैं. सो आपके पास कोई पेपर ट्रेल भी नहीं होता, एंड वो लीगल रिकोर्स की आपकी आई गेस एविडेंस ही नहीं बन पाती. सबको अवेयरनेस होती है कि ये सब कुछ चल रहा है, बट आपके पास वो एविडेंस, वो ट्रेल, पेपर ट्रेल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बहुत सी इस किस्म की चीज़ें वो होती हैं. इन केस ऑफ
बैंक लोन्स एक्चुअली पेपर पे सारी एविडेंस आपके हक में नहीं होती शायद उन औरतों के. So वो एक पेपर ट्रेल है जो anybody can, the bank will only look at that and they'll say कि यार मेरे पास तो यही information है और आप ही की information है. So it becomes a war of like who is right. And then obviously legal recourse seek करना financially बहुत burdensome होता है. Not all people can afford to actually go through lengthy redressal processes and all of that. So ये कुछ हमें financial side पे इस किस्म के इसके अलावा नज़र आते हैं कि gaps जो हैं. Okay, thank you. So now we've identified some of the gaps यहाँ पे, right? कि problem कहाँ आती है, why we fall victim to these scams and frauds, apps, what people who are out to get you. Then we moved on to कि अच्छा जब हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. I would like to say यहाँ पे just little interest कि रिपोर्ट करना प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर हैं लेकिन उनको फिर भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह हम अब पहले बात कर रहे थे, I really believe with the helpline कि हम जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो the state or other organizations won't be able to identify this as a problem. हम वरना अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अच्छा लोकेशन की एक शहर में FIA का साइबर क्राइम विंग नहीं है, बट अगर वो कह रहे होंगे कि यार यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही हैं, 1 या 2 रिपोर्ट्स है तो हम यहाँ पे क्यों विंग खोलें, राइट? सेम विद फाइनेंशियल फ्रॉड, यहाँ पे तो कोई केसेस ही नहीं आ रहे तो फिर वाई शुड वी ओपन. बट जब तक रिपोर्ट करेंगे, आई नो हमारे माइंड में होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ख्वारी होगी, बहुत मेहनत लगेगी, श्योर. लेकिन जब तक वो रिपोर्ट्स नंबर्स वो क्लाइम नहीं करेंगे, अच्छा 100, 200, 300 रिपोर्ट्स आ रही हैं, देन द स्टेट वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज कि अच्छा दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू, बिकॉज इट्स बिकम बिग इनफ प्रॉब्लम कि हमें अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ गई है. सो इट्स ऑलवेज आई थिंक अ गुड आइडिया टू रिपोर्ट इट, इवन इफ it takes a lot of out of you, even if you think there's nothing is going to become of it, but I still think that it's very important to just get out and report the issue to the people who need to solve it. But coming back to our last question now, because I think we need to start wrapping up. But now what is the responsibility on us now? हम अपने पर्सनल लाइफ में हम ऐसी क्या सेफ प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज यू हैड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and you are part of the financial I'm not sure if this is corporate or but लेकिन हमारे workplaces में हम ऐसी क्या क्या practices adopt कर सकते हैं, not just for ourselves but for the people that we are responsible for. What can we do to make our online spaces a safer place for young women, young girls, for everyone really? हम इस तरह की क्या क्या practices adopt कर सकते हैं? Like in this case, so far we have talked about how to protect the victims. What about the people who are, the criminals who are doing all this? उन पे भी तो focus करना है ना, वो भी तो हम जैसे इंसान हैं. वो क्यों कर रहे हैं? We have to address that as well. कि हम लोगों को अपने ethics पे focus करना होगा. Suppose we are protecting the girls, reporting भी नहीं है. जैसे मैंने कहा साउथ पंजाब में जो एक ऑफिस है, they have 13,500 cases and they can't pursue all. एक के लिए भी मुझे एजेंसी से कहलवाना पड़ा, उसके बाद they went for a raid because they can't go after all these. मसला ये है कि हमें men who are indulging in this kind of activities, उस पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि उनके ethics को एड्रेस करना होगा. As parents, as sisters, as brothers, हम लोगों को इन लोगों की mindsets change करने होंगे. As educationists, अगर mindsets change होंगे कि भाई respect है, इस तरह से blackmailing, ये चीज़ें, if somebody कई दफ़ा fiancés या friends बाद में their relationship turns sour और उसके बाद they start blackmailing them. ये सारी चीज़ें practices ख़त्म करनी होंगी और ethical standards को improve और students को awareness, because ये बहुत आसान था. कोविड में जैसे था WhatsApp ग्रुप ढेरों ढेर बन जाते थे.
youngsters were sitting at home, they were confined to their homes. So different groups ban jaye, and people, without even thinking, if somebody would invite you to be a part of that group, the students would become youngsters उस group का हिस्सा बन जाते हैं, और उनको बिल्कुल नहीं, छोटे थे आप लोग या हम लोग जब छोटे थे तो पेरेंट्स यही कहते थे ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं नहीं जाना, और बार बार कहते थे. तो इसमें भी यही है कि अननोन व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन अननोन में भी दिस गर्ल सेड कि उसमें तो मेरी सारी बहुत सी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स भी थी. अब उस ग्रुप में 308 लोग थे जो ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस की थी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत से जानने वाले थे. तो शी सेड कि ये ठीक होगा, मगर उसमें भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें अवेयरनेस देनी होगी अबाउट जॉइनिंग सच ग्रुप्स ब्लाइंडली. और उसके बाद ये है हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसको फर्दर सहल बनाए, इसको आसान बनाए, बिकॉज रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस, परस्यूइंग दोज केसेस, और लॉयर्स कम्युनिटी में भी आई वुड रिक्वेस्ट के ना उसमें भी आकर वॉलंटियर्स हों who should help basically, who should help people who can't afford this legal aid, उनको मिलनी चाहिए. Thank you. So you've mentioned a few good points, especially the one that I'd like to expand on is कि आपने जो online strangers से आप जो बात करते हो या उनसे interact करते हो, I feel like online spaces में भी अब I think it's ज़रूरी हो गया, but also आपकी social life का part बन गया, right? To be able to interact with strangers online. लेकिन फिर आपने ये ज़रूरी होता है देखना कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से कितना उनको बता रहे हो, कितनी क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में उनको दे रहे हो. सो जैसे पिक्चर्स या फिर आप कहाँ रहते हो, किसके साथ आपका सबसे ज़्यादा मिलना जुलना है, आपकी अगेन यू नो आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन. You can share your thoughts, your ideas and stuff, that's great, but again you have to be safe कि अच्छा what if this person might be able to get to me. The other thing that you mentioned was, I'll expand on it later, but yeah, over to you. For sure. So I think before I go to the part कि हमें अपने आप को protect करने के लिए क्या होता है, हमें बहुत important, especially when we're talking about financial fraud, हमें ये दिमाग में रखना बहुत important है ये कि isolation में नहीं हो रहा, especially when women के इर्द-गिर्द. Unfortunately हमारी financial institutions जो हैं वो access to finance के इर्द-गिर्द औरतों के लिए solve ही नहीं कर रहे हैं. And I will say कि पहले pink label accounts होते थे, पर अब for example एक शगुफ्ता, and I hope this is a made up name, it's not meant to be, but some you know name that जो है gender associated नाम होगा या कुछ इस तरह होगा, शगुफ्ता account हो जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि अच्छा आप 500 डाल लें, पर documents आपको फिर भी ऐसी 6000 शायद 6000 नहीं, पर मतलब आपको 5 ऐसी document देनी है जो आपके पास एक्सेस नहीं और आपके नाम पे भी नहीं है शायद. सो आई थिंक कि हमारी इंस्टीट्यूशंस पे भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बियॉन्ड जस्ट पिंक लेबलिंग एंड पुटिंग अ नेम अटैच टू अ बैंक अकाउंट जो कि डिनोट औरतों को करता है, वो एक्चुअली जाके उस फाइनेंशियल एक्सेस को करें. बिकॉज अगर आपको फाइनेंशियल एक्सेस है ही नहीं तो आप डेफिनेटली इनफॉर्मल चीज़ों को और ज़रियों को अख्तियार करोगे. इस वक्त कमेटीज़ की मैं बात करूँ, 40% ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमेटियों के थ्रू सेव कर रहा है. उनके पास और कोई, और इन औरतों के पास और कोई वे ऑफ फाइनेंसिंग है ही नहीं. सो एक तो ये. दूसरी चीज़ आई थिंक आई विल से, एंड ये बहुत बेसिक लगती है, बट वी हैव प्लीज़ अपना पासवर्ड या पिन कोड 1 2 3 4 मत रखिए और हर चीज़ का सेम 4 पिन पासवर्ड मत रखिए. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट. इनकी लगता है कि नहीं कौन रखता होगा, पर बहुत से लोग ऐसे पासवर्ड्स रख लेते हैं जहाँ पे लोगों के सामने शेयर कर देते हैं. एक और चीज़ ये है कि किसी पे भी आप कोई भी इदारा जो रजिस्टर्ड हो, जो फॉर्मल हो, जो रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनके एक तो ये कि किसी प्राइवेट नंबर से या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको कॉल करके कभी भी आपकी पिन कोड नहीं मांगेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं मांगेंगे, हमेशा ऑफिशियल नंबर से आएगी. एंड प्लीज़ बी वेरी, कभी कभार अब तो कुछ लेंडिंग इलीगल ऐप्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो रिनोन्ड ऐप्स की कॉपीज़ हैं
उन्होंने उनका लोगो हल्का सा कॉपी करके इधर उधर कर दिया है, सो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग फूल्ड कि ये एक्चुअल ऐप है या प्रेडेटरी लेंडिंग ऐप है। सो कुछ इस किस्म की रिड्रेसल्स की बहुत ज़रूरत है। हमेशा चेक करें अगर आप किसी बिजनेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या एंड आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्पेशली व्हेन वुमेन आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, राइट? क्योंकि उनके पास शायद बैंक अकाउंट्स होंगे भी नहीं, बट डू योर रिसर्च, रिव्यूज़ पढ़ें और लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ें। अगर किसी जगह की सिर्फ 2 लाइक्स हैं तो देर प्रॉबली नॉट लेजिट। A lot of these things, always ask for receipts, paper trail जितना आप लोग maintain कर सकते हैं उतना करें, and I think these are some of the ways that we protect ourselves online, जो कि हम भूल जाते हैं, बहुत छोटी लगती हैं पर हम अक्सर वो नहीं कर रहे होते। and one of the biggest things is कभी कभार हमें receipt आती भी है, हम रखते भी हैं, पर हम WhatsApp पे मिलती है या कहीं online होती है, हम delete कर देते हैं। Please keep all of your records on you, download them somewhere. उनका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस इट्स गॉन तो फिर आप जितना भी कहते रह जाएं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। Those are some excellent points. Actually, आपके last point पर I'd like to expand. Never delete anything, basically. आपने अपने फ़ोन में से delete करना है, आप कहीं और सेव कर लो. This especially applies to young women who are being harassed, or not everyone who is being harassed online in any way, especially अगर आपको कोई threats मिल रही हैं, bullying हो रही है, blackmail हो रही है, कुछ भी. I've noticed so many girls who call us and then they say कि oh I don't have any evidence because मेरे डर के मैंने सब कुछ delete कर दिया. So basically even if they had a case, अगर वो जा भी सकती थी, they could have caught the perpetrator, लेकिन अब they have no evidence, उन्होंने सब कुछ delete कर दिया होता है. So financial receipts, everything, but also for like you know personal safety, आपने अपने फ़ोन में नहीं रखना, save it somewhere else. The passwords was a great thing. हम usually ये करते हैं कि अपने सारे accounts के एक ही password रखते हैं, या फिर you said would the 1 2 3 4, but it's also Pakistan 1 2 3 जो बहुत basic होता है. I think that's my dad's password maybe. But so these are basic things, you know, capital letters, small letters, special characters apply करना, make it a phrase, not a word, अपने बहन का नाम ना use करो, अपनी date of birth ना use करो, very basic things like these. लेकिन हम सारे we never think about these, and we never think कि जी हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होगा. I still don't, and I was I think I was telling you कि I mean I was about to fall victim to one of those financial bank case scams, like even though I work in this field and I know what's going on. So, but I think we're running out of time. Thank you so much for being here. Thank you so much for telling us about your experiences. And I just like to quickly wrap up. थोड़ी सी self promotion भी कर दूँ. We do have like places where we can turn to for help if we are facing cyber crimes. But if you ever feel scared, if you ever need, if you feel the need that you don't, that you need to know more, that you don't know enough, आपको थोड़ी सी और help चाहिए. I think हमारी कुछ brochures भी distribute हुए थे, but we run the cyber harassment helpline, जिसका number है 0800 39393. We provide free legal services as well, especially in Lahore. हमारी lawyer, हमारी legal team होती है जो आपको company करती है, but we also give you digital security support as well as psychosocial well-being support. I'd like to thank you again, and I'd like to wrap this up. Thank you for attending our event, and I hope that this was very informative for you. Thank you guys. Hi, we're here from Justice Project Pakistan. We're a legal action nonprofit based in Lahore, and our work concerns reducing the scope of the death penalty and representing most vulnerable prisoners, Pakistani prisoners at home and abroad. We have today 2 installations. The first is a video game called This Is Not a Game. Through this game, you go through the criminal justice system trying to get out a loved one, and it shows you all of the difficulties and all of the danger that people who go through in the criminal justice system. Our second piece, this is the box piece. You can stop this at any time. This one really gives you an immersive experience of what it's like for a prisoner in their final hours
alive on death row. It kind of encourages you to engage and really think about what people go through and the suffering that they have to go through because of, the criminal justice system and the death penalty. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. We're going to start the performance called Voices Unheard. It is a performance which has been curated by Zara Madni, and the two Rul-Mil songs are also composed by her, as well as a naat which is going to be part of this performance and recited by Zara Madni, as well as a student from Idaru School for the Blind, Anamta. And this performance will also include an Afghan refugee band, which is called Baghi. So up on the stage we have wonderful Khalid from Aro, and yes, please, some तालियां तो बजाएं, please. पुरजोश इस्तकबाल में आपको मैं बताती हूँ कि Shalom Xavier is also going to be part of this performance. And so, ladies and gentlemen, girls from Idaru and Baghi and Zara Madni, over to you. Oh, I'm so sorry. Shahid and Shams also. Please, ladies and gentlemen, a big round of applause for Shahid and Shamsi. Good evening, everyone. Thank you all for being here. Also, I'm extremely grateful to WOW for inviting me to perform this evening with my beautiful students from Idaru and the Afghan refugee camp. Thank you all for being here once again. We're going to start the show with this beautiful, I mean, if I may say so myself, it's a naat which has been composed by myself. And it's called Tazeem Se Leta Hai, Khuda Naam-e Muhammad. It's my composition, and Anamta is going to recite this with me. Hope you all enjoy it. Thank you. Tazeem se leta
सल्ली अला नामे मोहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नामे मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ली अला नामे मोहम्मद। कुरान में जन्नत में सरे अर्श सारे लोग किस शान से खालिक ने लिखा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ले अला नाम मोहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ले अला नाम मोहम्मद। मुज़म्मिलो मुदस्सिर कह कह के पुकारा किस प्यार से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ले अला नाम मोहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ले अला नाम मोहम्मद। डरता था गुनाहों से मैं रहमत ने नींद दी। गाफिल तो कहीं भूल गया नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ली अला नाम मोहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ए सल्ली अला नाम मोहम्मद। Thank you. Good. Anamta, that was really, really lovely. Thank you. Thank you. All right. Now we're going to begin with our second performance. The song is called Rahe, Ye Wajah Jeene Ki. And this is also my composition, and it's written by Mr. Asim Raza. He's a very famous lyricist. He writes beautifully. He's done a lot of work for us at Coke Studio, and we've had a great time working with him. All right, girls, please come on stage. Also, I would like to introduce my beautiful band here. We have Khalid Khan on the bass. He's a bassist from the RO band. Yes. And we have Shahid Rahman, who's, as we call him, the Mahol guitarist. He's
He's going to create this beautiful feel in the songs through his playing. On the main guitars, we have Mr. Shalom Xavier from the Fusion Band. Shalom has been very kind. He's helped me put all the songs together. And who else? Shamsul Arifin on the drums. Please give him a big hand. Thank you. Shall we?
Thank you. Next. It's Rull Mill 2. Rull Mill 2. So this song I composed, the one that I'm going to perform now with these beautiful girls, is a song that I've composed with Mr. Shalom Xavier. He's helped me immensely with this composition. So a big thanks to you, Shalom. No, thank you. It's a wonderful experience, all of this. And thank you, Wow, for giving us all the opportunity. And thank you, Shahid, for the background sound. And thank you all for attending this wonderful festival. And thank you, Maya. My daughter is here, 7 years old. She's sitting right there. Oh, yeah, she's amazing. The next... Maya, where are you? I woman can't of the see world. you. Really weak Maya, raise your eyesight. hand. There she is.
रल मिल के हमने अरमा सजाने हैं सारे अब मिल के हमने दुनिया को इरादे दिखाने रल मिल के हमने देखे जो सपने वो पूरे हैं करने हमने जज्बे ये वादे निभाने रल मिल के हमने अरमा सजाने हैं सारे अब मिल के हमने दुनिया को इरादे दिखाने रल मिल के हमने Thank you. So now we're going to perform the Mast Qalandar by Ustad Nusrat Fateh Ali. Please don't judge me, my Punjabi is not very nice, but I'll try. Shall we?
Thank you. Oh, thank you. Thank you, you guys have been amazing. Thank you for all your love and support. It really means a lot. Thank you. Yes, please, you can take them. Thank you, girls. You've been amazing. You've been so cool. Wow. Amazing performance, guys. You rock, all of you. Just one last. You just have to bear with us with just one more song. Thank you. So it's बोल के लब आज़ाद हैं तेरे by Tina Sani. Faiz Ahmed Faiz साहब की poetry है. Hope you all enjoy.
so much. Thank you. Good night. God bless you. Bye. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. मेरा नाम सरमद खूसट है जी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ईयर्स वाओ अगेन. एक इसकी जर्नी के साथ मेरी भी जर्नी अटैच्ड है. आई रिमेंबर पहला वाओ जब यहीं हुआ था. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इकट्ठे होते हैं और किसी खुशी के मौके पे इकट्ठे होते हैं. और मेला करना, रलना मिलना हमारी एक बुनियादी इंस्टिंक्ट भी है और ज़रूरत भी है. अबाउट दिस थिंग मंडुआ, which is one of the things that I am doing this year at WOW. मंडुआ कहते हैं जी पंजाबी में सिनेमा को, या फिल्म को भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक सिनेमा देखने का पूरा एक्सरसाइज है उसको हम लफ्ज़ मंडुआ इस्तेमाल करते हैं. पुराने ज़माने में क्या होता था कि उन जगहों पे जहाँ पे सिनेमा हाउसेस नहीं होते थे तो ट्रैवलिंग सिनेमा होता था, यानी चलता फिरता सिनेमा. तो इसी तरह से एक पॉपअप टेंट होता था, उसमें एक स्क्रीन लग जाती थी, स्पीकर होते थे, उसको जनरेटर से या ट्रैक्टर से अटैच करके तो लोग फिल्में देखा करते थे. और वो जो मंडुए की एक अपनी क्या कहना चाहिए मेले के साथ उसकी जो एक जुड़त है, उसको समहाउ थोड़े से आजकल के दौर में सिर्फ उसका एक री इंट्रोडक्शन करवाना मकसद है. दूसरा, ये लाहौर बिएनाले के साथ हमने एक वर्चुअल म्यूज़ियम का इनिशिएटिव था, उसका हिस्सा था ये. मुझे लगा कि बहुत से नए फिल्म मेकर्स जो हैं हमारे, वो हमारे सिनेमा को ज़्यादा नहीं जानते, उसके बारे में उनकी जो क्या कहना चाहिए उससे आगही, उससे शनासाई वो बहुत कम है. सो दिस वाज एन एक्सरसाइज दैट आई डिड विद अ बंच ऑफ यंग फिल्म मेकर्स. द आइडिया वाज कि आपका सिनेमा जैसा भी था, हमें इख्तलाफात हो सकते हैं एस्थेटिक्स से, टेक्निकलिटीज़ से, लेकिन वो आपकी तारीख़ का हिस्सा है और उसको आप तारीख़ को मिटा नहीं सकते. तारीख़ बीत चुकी, गुज़र चुकी, वो हो चुका. सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू द इडियम ऑफ आवर सिनेमा, टू दीज इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स जो कि बहुत से कम वसाइल में किए गए. उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पे हमें बहुत फ़ख्र होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हंसी भी आती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्कनेक्ट चाहते हैं कि ये कुछ और हो रहा था, ये वो नहीं था जो हमारी शना. सो इन एनी केस all these questions or all these assumptions that I had or what a lot of young filmmakers have, वो फासला, वो दूरी कम करने के लिए एक एक्सरसाइज दी गई कि आपको 75 साल हो चुके पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्दी वजूद में आ गई थी साथ ही, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत रिच ट्रेडिशन और कल्चर था सिनेमा का. तो हर दिहाई में से आपको एक थीम या एक कीवर्ड लेकर उसके हवाले से मुख्तलिफ फिल्मों में से क्लिप्स ढूंढने थे. उन क्लिप्स को जोड़ के आपने एक मोन्टाज बनाना था, और उस मोन्टाज का जो आखिरी हिस्सा है वो उन्होंने खुद शूट करना था उसी थीम या उसी कंटिन्यूएशन के अंदर. मेला ऐसा ही होता है, मेले में शोर भी होता है, मेले में लोग हंसते भी हैं, गाते भी हैं. सो इन एनी केस देयर इज शीमा किरमानी ऑन स्टेज एंड आई कैन स्पॉट हर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर नाउ. बट सो वो जो आखिरी हिस्सा था वो उन्होंने खुद शूट करना था. सो दीज आर मोन्टाजेस विच आर बेस्ड ऑन सर्टन थीम्स, और आप देख के सिर्फ ना एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड या एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ आवर सिनेमा देख सकेंगे, बल्कि एक फिल्म में जो कुछ आप दिखाते हैं वो तो एक चीज़ होती है, लेकिन जब एक शॉट दूसरे शॉट से जुड़ता है, जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं, उससे क्या नए मानी निकलते हैं. सो वो मोन्टाज की भी एक क्या कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट है कि ये मुख्तलिफ क्लिप्स मुख्तलिफ फिल्मों से निकल के जब जुड़े हैं तो उससे क्या एक कलेक्टिव मैसेज आ रहा है. So please, I would request and encourage all of you to come to WOW for all the wonderful things that are happening around beach luxury, in beach luxury. But मंडवा भी ज़रूर आएँ, आके प्रोजेक्टर के ऊपर देखें हमारी फिल्मों के कुछ टुकड़े, और उनसे जो कुछ आप अख़ज़ करना चाहते हैं वो कीजिए. So I present to you मंडवा.
ये हवा की उन सौतेली बेटियों का बाजार है जानू, जो पाँव में घुंघरू बांधकर रात रात भर आदम के सगे बेटों से अपने लिए चादर और चारदीवारी का सवाल करती है। मैं तबाही जरूर हूँ, पर जिस्म की ताकत नहीं, फंदा मुजाहरा करनी है, ख्वाहिशों का सौदा नहीं। ये वाला थाना जाता ना, ये वाला थाना जाता, लोग भूल जाओ, सब भूल जाओ, यहाँ मैं भूल हो सकता। अब इन खिलौने खरीदारों के पास खुद तो चढ़कर नहीं जाया करते दबा खा, जो खरीदने आते हैं मैं बिक जाती हूँ। अच्छा अच्छा, हम तो तुम जैसे मर्दों के लिए गलाजत का वो ढेर है, जिसकी बदबू का एहसास तुम्हें रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में होता है। खाया जाता है। और बताओ कि औरत को दवाई कौन बनाता है, उसका कोठा किसके दम से आबाद होता है, और क्या शुरफा इस जुर्म में बराबर की शरीक नहीं। और यहाँ हमारे अलावा कोई और औरत नहीं है कमाने वाली। घर की लड़कियां ना इस किस्म का बेहुदा डांस नहीं करती। जी अम्मा। समंदर या सहरा? सहरा। अंधेरा या उजाला? उजाला। किस्मत या बगावत? सब कुछ किस्मत में नहीं लिखा होता। नहीं, अगर एक चूज करना हो तो? किस्मत से बगावत। चीटर। ज़ारा, सोने का वक्त हो गया है, अभी तक जाग रही हो? अच्छा मुझे जाना है। रुको, guess what? मैं कराची आ रहा हूँ। Really? हाँ। कब? कैसे? 2 दिनों में पहुँच रहा हूँ। अच्छा, cool। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही। हूँ, मगर अगर हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं आए तो? अरे ज़ारा, हम कब से बातें कर रहे हैं, अब भला मिलकर ऐसा क्या बदल जाएगा? हम सारी जिंदगी ऑनलाइन भी तो नहीं बैठ सकते ना। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या चल रहा है? काम शाम। स्कूल कैसा रहा?
नहीं। अच्छा तूफान आ रहा है, रस्सी से कपड़े उतार लो। सब सेट है? हाँ। बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। ओह नाइस, मुझे भी डांस करना है तुम्हारे साथ। मुझे एक ख्वाब आया जिसमें हम साथ थे और उस ख्वाब में हम एक ज़ारा, जनरेटर चलाऊं? जी बिल्कुल अब्बू। किससे बातें हो रही हैं? आमना से। मुझे तुम्हारा डांस देखना है, एक बार पक्का। बस तुम दिखाओ तो मैं भी अपना दिखाऊंगा। तुम्हारे डांस ने मेरी नींद उड़ा दी। ओह ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ऑन है, इसकी टेक्निक होती है। मेरी तो बोलती बंद हो गई है, मगर क्या? बहुत सेक्सी है यार। क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्का? हाँ। गज़ाली थ्योरी के मुताबिक माशरे की मजबूती का इन्हसार औरत की पाकीज़गी पे है। औरत का लिबास उसके किरदार की अक्कासी करता है। स्पोर्ट्स से ज़्यादा और क्या नहीं खेला जा सकता। ज़ारा खड़ी हो जाए। ज़ारा अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल रही और उन्होंने चादर भी ली हुई है, मगर किस तरीके से ली हुई है? महज अपने सीने को उभारने के लिए। सही कीजिए इसे। ठीक ही तो है मिस, आप अपने सोचने का अंदाज बदलें। जी कोने में जाके खड़ी हो जाएं।
बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। चुड़ैल कहीं की। यार तुम कभी कभार थोड़ी ओवर हो जाती हो ज़ारा। शायद तुम ठीक कह रही हो। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मैं बहुत सेक्सी डांस करती हूँ। क्या तुमने उसके लिए डांस किया? नहीं, वीडियो शेयर की थी। यार तुम बहुत सीधी हो। क्यों? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, मिली भी नहीं हो तुम उससे। मैंने तुम्हारी वीडियो फिर से देखी और दोबारा देखी। हाय। मगर तुमने सेव क्यों की? वो तो डिसअपीयर हो जानी थी। दोबारा देखनी थी। फिक्र नहीं करो, इट्स सेफ विद मी। सिर्फ तुम्हारी नजरों के लिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। तुमने किसी और को तो नहीं भेजी? जाहिर है। तुम्हारे ख्याल में मेरी वीडियो बुरी है? नहीं। तुम श्योर नहीं लग रहे। अच्छी है, बस थोड़ी सी। टेल ना। मैं कहूँगा अच्छी है, मगर है थोड़ी सी छिछोरी। तुम बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह बातें कर रहे हो। उनको भी तुम्हारी जिद की फिक्र होगी ना। तुम प्लीज उसे डिलीट कर दो। मुझे अच्छी लग रही है, नॉट इन अ बैड वे। दो इतनी तपी हुई क्यों हो? अगर तुम्हारे ख्याल में मेरी वीडियो छिछोरी है तो फिर हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं कल कराची सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि अगर ये वीडियो लीक हो गई तो क्या कल स्कूल का आखिरी दिन है बेटा? इम्तिहान की तैयारी हो गई है? जी। किन सब्जेक्ट्स में तीर मारने वाली हो? आर्ट्स। ज़रा आपका फ़ोन दीजिएगा प्लीज़, 1 मिनट के। जी? मैं फ़ोन घर भूल गया हूँ, मुझे कुछ चेक करना। मैं चेक करके देती हूँ। बेटा, अपना फ़ोन दीजिए मुझे बेटा। अनलॉक कर दीजिए।
क्या मजाक चल रहा है? उसने फिर कुछ कहा इस बारे में? मैंने कहा था किसी को कुछ मत बताना। कैसे देख रही है? We will have a bite called Virtual Wellness, Telehealth for Communities, where Dr. Sara Khurram will be talking about virtual health. The second bite is going to be Stories of the Past, Hopes for the Future with Kalpana Devi. The third bite that we will have will be Women in Teams with Aqsa Tariq. Assalamu alaikum ji, how are you? My name is Dr. Sara Said Khurram. If I can request everyone who's in the room to step forward, अगर आप थोड़ा आगे आ सकें. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. Thank you. अच्छा जी, तो मेरा नाम डॉक्टर सारा सईद खुर्रम है. मैं एक कंपनी चलाती हूँ सेहत कहानी के नाम से, और मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं 5 साल की थी. मैं एक पाकिस्तान के एक बहुत नॉर्मल से मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई, और मेरे 2 बड़े भाई हैं एंड आई एम द यंगेस्ट एंड आई वाज द ओनली डॉटर इन द फैमिली. तो अक्सर मिडिल क्लास घरानों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो बचपन से उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है. एंड आई एम श्योर कि आप सब अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. बिकॉज हमारे यहाँ अगर खातून डॉक्टर हों, उसके साथ साथ वो टॉल हों, फेयर हों, प्रिटी हों, तो उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है, जिसको हम डॉक्टर ब्राइड फिनोमेना भी कहते हैं पाकिस्तान में. सो माई पेरेंट्स ऑब्वियसली वो मुझे पढ़ाना चाहते थे. उन्होंने सोचा कि कैसा प्रोफेशन चूज़ करें अपनी बेटी के लिए जिसमें उसको इज्जत मिले, उसका सोसाइटी में स्टैचर इम्प्रूव हो और उसकी अच्छी जगह रिश्ता भी हो जाए. तो मैं डॉक्टर बन गई. मैं कभी कोई और करियर चॉइस मेरे पास नहीं था ज़िंदगी में. जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई, और मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल और एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे बहुत खुशी थी कि पहली बार मेरा कुछ लड़कों से इंट्रैक्शन होगा यूनिवर्सिटी में. तो मैं बहुत खुश नए कपड़े पहन के अपने मेडिकल कॉलेज पहुँची. और जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में घुसी तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जिसमें 300 बच्चे थे और उसमें से 280 खवातीन थी. मेरी पूरी मेडिकल की क्लास में सिर्फ 20 लड़के थे. एंड दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज कि पाकिस्तान में हमारी जो टोटल मेडिकल फोर्स है, जिसमें अराउंड 2,24,000 डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसमें दिस इज़ नॉट वर्किंग, उसमें 80% जो हैं वो फीमेल डॉक्टर्स हैं. और उसमें से उन 80% फीमेल डॉक्टर्स में से 40% कभी काम नहीं करती. वो घर बैठ जाती हैं शादी के बाद या घर बिठा दी जाती हैं. एडिशनली हमारे मुल्क में बहुत सारे डॉक्टर्स बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चले जाते हैं. तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो मैंने ये अपने सामने होते हुए देखा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, पियर्स, उनकी शादियाँ होने लगीं, वो प्रेग्नेंट होने लगीं. मेरी जो फाइनल ईयर की ऑस्की हो रही थी उसमें मेरे आगे जो लड़की थी वो भी एग्ज़ाम दे रही थी, वो भी प्रेग्नेंट थी. जो पीछे थी वो भी प्रेग्नेंट थी. अब बहुत सारी मेरी दोस्तों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की मेडिसिन. लेकिन जब मैं हाउस जॉब करने सिविल हॉस्पिटल कराची में गई, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कराची के अंदर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब ये फ़ीमेल डॉक्टर्स काम नहीं करती तो इसका नुकसान क्या होता है. इसका नुकसान ये होता है कि जब मैं मेडिकल के वार्ड में अपनी हाउस जॉब कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे मरीज़ सिविल हॉस्पिटल कराची में मरने के लिए आते हैं कंफर्टेबली एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर, क्योंकि उनके जो मर्ज़ होते हैं वो इतने मुश्किल हो चुके होते हैं कि डॉक्टर्स उनको उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए. इन सारे मरीज़ों को प्राइमरी केयर में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने विलेजेस में डॉक्टर ही नहीं मिलता, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम नहीं करते.
तो जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकली और मैंने अपने टर्शी केयर हॉस्पिटल में ये हाल देखा, तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि किस तरह हम डॉक्टर्स को इन कम्युनिटीज़ में लेके जा सकते हैं। खैर ज़िंदगी आगे बढ़ी और मेरी भी शादी हो गई फ़ॉरेन ग्रेजुएशन के बाद। आई बिकेम अ डॉक्टर ब्राइड माई सेल्फ। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट ये किया कि मैंने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करी, लेकिन आई गॉट प्रेग्नेंट और मुझे वो रेजिडेंसी छोड़नी पड़ी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त काम करने के लिए मैंने सुल्तानाबाद, जो कि एक छोटा सा इलाका है कराची के अंदर, यूएस एम्बेसी के पीछे, यहाँ से काफ़ी करीब है, वहाँ पर मैं एक क्लिनिक रन करती थी। और मैं वाहिद डॉक्टर थी पूरी कम्युनिटी के अंदर, और इस कम्युनिटी में कोई 3-4 लाख लोग रहते हैं आज भी कराची में। और उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि जब एक डॉक्टर कम्युनिटी में आता है तो कितना फ़र्क पड़ता है वहाँ लोगों को, क्योंकि उनके मसले प्राइमरी केयर में सॉल्व होना शुरू होते हैं और उनको भाग भाग के टर्शी केयर या बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता। तो जब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई और मेरी बेटी पैदा हुई, तो मुझे वो क्लिनिक छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ लाहौर जाना पड़ा। और जब मैं लाहौर पहुँची तो आई फेल इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार वाकई डॉक्टर ब्राइड बन गई हूँ। आई कुडंट वर्क, आई कुडंट लीव माई बेबी एट होम, और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम में जो मेरी नर्स थी, जो मेरे साथ उस क्लिनिक में काम करती थी सुल्तानाबाद में, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहिबा आप चली गई हैं, वी डोंट हैव अ डॉक्टर टू रिप्लेस यू, यहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो मैं, क्योंकि आई वॉज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई वॉज वेरी अपसेट, मेरे पास करने को कुछ घर में होता नहीं था, तो मैंने उससे बोला कि जब तुम्हारे पास पेशेंट आए तो तुम मुझे कॉल पे ले लेना। सो हमने एक कॉल पे कम्युनिकेशन शुरू की, मी थ्रू अ नर्स विद द पेशेंट। मैं लाहौर में थी, पेशेंट कराची में होता था, एंड विद टाइम हमने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के बजाय एक वीडियो कंसल्टेशन शुरू करी। तो उसने अपने लैपटॉप का कैमरा यूज़ करके वो मुझे कनेक्ट कर देती थी डॉक्टर के साथ, और मैं कंसल्टेशन करती थी। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं लाहौर में बैठ के एक पेशेंट कराची में देख सकती हूँ थ्रू अ नर्स, जो हमारी इतनी सारी फीमेल डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम नहीं करती, क्या हम उन्हें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेशेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ द आइडिया विद विच आई स्टार्टेड सेहत कहानी। सेहत कहानी एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर को पेशेंट से कनेक्ट करता है यूजिंग अ चैट, ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन। तो जब हमने शुरू किया तो हमने लो इनकम एरियाज़ में क्लिनिक्स बनाने शुरू किए। ये क्लिनिक्स नर्सेज चलाती हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, ये फिजिकल स्पेसेस होती हैं। पेशेंट जब क्लिनिक के अंदर आता है तो नर्स उसको एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट करती है। ये क्लिनिक्स हम हमेशा उन एरियाज़ में बनाते हैं जहाँ पर कोई फिजिकल डॉक्टर कभी नहीं पहुँचा होता, तो एक्सट्रीमली दूर दराज लो इनकम एरियाज़ में हम ये क्लिनिक्स बनाते हैं। तो जब मैं ये क्लिनिक्स बना रही थी तो आई रियलाइज्ड कि हम इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रहे हैं इन कम्युनिटीज़ के अंदर, लेकिन मैस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, आपके और मेरे जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी डॉक्टर्स को भी हम एम्पावर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक क्लिनिक में सिर्फ 2 डॉक्टर्स होती हैं। तो 2017 में हमने क्लिनिक्स बनाने शुरू किए और 2018 में हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का आइडिया सोचा कि लो इनकम एरियाज़ में तो हमारे क्लिनिक्स हों, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए हम एक ऐप बनाएं। वो ऐप ये करे कि जब भी कोई अपने घर पे बैठे बैठे बीमार हो, वो उस ऐप को यूज़ करे और डॉक्टर से कनेक्ट करे। एक चीज़ जो हमने अपने क्लिनिक्स में देखी थी कि जब पेशेंट क्लिनिक के अंदर वॉक इन करता था और डॉक्टर से इंस्टेंटली कनेक्ट करता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि हमें बग़ैर वेट किए, कहीं दूर दराज जाए हुए, बहुत सारे पैसे खर्च किए बगैर हमारा डॉक्टर से रब्ता हो गया। तो हमने वो चीज़ अपनी ऐप में रेप्लिकेट की और हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हम इंस्टेंट कंसल्टेशन कहते हैं। अगर आप सेहत कहानी की ऐप डाउनलोड करें तो आप डॉक्टर से विद इन 60 सेकेंड्स चैट, ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस था, लेकिन हमने क्रिएट किया क्योंकि हम चाहते थे कि लोग हमारी ऐप को यूज़ करें और इमरजेंसीज़ में डॉक्टर से कनेक्ट करें। तो जब हमने ये ऐप बना ली और हमने लोगों में फैलाना शुरू की 2019 में, तो कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा था। सब लोगों का ये ख्याल था कि कैसे हो सकता है कि डॉक्टर घर पे बैठी हो, हम ऐप यूज़ करें और डॉक्टर हमारे साथ बात कर ले। जब तक डॉक्टर पेशेंट को छूता नहीं है, उसकी नस नहीं लेता, तो इलाज हो ही नहीं सकता। तो इतने में आ गया कोविड। तो 2020 में जब कोविड आया तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा और फिजिकल डॉक्टर से रब्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। एंड दैट इज़ व्हेन सेहत कहानी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट। हमने अपनी ऐप गवर्नमेंट के साथ मिलकर 6 महीने के लिए फ्री करी।
और जब हमने ये ऐप फ्री करी और लोगों को हमने ये ऐप डिस्पर्स करना शुरू की विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, तो हमने देखा कि जो 60-70 डॉक्टर्स हमारी ऐप पे काम कर रहे थे वो बढ़ के 1000 डॉक्टर्स हो गए, और जो 500-600 पेशेंट्स हम दिन के देख रहे थे वो बढ़ के 2000-3000 पेशेंट्स हो गए। तो लोगों ने वाकई ऐप डाउनलोड करना शुरू की और देखना शुरू की। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। तो कोविड में जब शुरू हुआ अप्रैल के अंदर कोविड, तो हमारी एक पेशेंट थी जो गुलिस्तान जौहर के अंदर, शी वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट, वो अकेली थी, उनके हस्बैंड दुबई में फंस गए थे, एंड शी वाज अ फर्स्ट टाइम मदर, अ 21-year-old इन अ फ्लैट इन गुलिस्तान जौहर, और उनको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने रात में सेहत कहानी की एक डॉक्टर से रब्ता किया और हमने उनको इंस्टेंटेनियसली हॉस्पिटल पहुंचाया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कोट करूंगी कि हमने बलूचिस्तान में एक पेशेंट था जो हार्ट फेलियर में था, और हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप उसे मेडिसिन से मैनेज करें तो वो मैनेज हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई डॉक्टर बलूचिस्तान में उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो हमने एक कार्डियोलॉजिस्ट को उनसे कनेक्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पेशेंट सर्वाइव। सो दैट गेव अस द अपॉर्चुनिटी एंड दैट गिव अस द एक्सपोजर कि ये एप्लीकेशन और हमारा नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स हम पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमने रैपिडली इस ऐप पे काम करना शुरू किया। ऐप के हमारे 2 तरह के कस्टमर्स को हमने ऐप देनी शुरू करी। एक तो आपके और मेरे जैसे लोग जो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, एंड देन वी ऑल्सो गिव इट टू कॉर्पोरेशंस ताकि उनके एम्प्लॉयज़ और फैमिलीज़ हमारी ऐप को यूज़ करें इन कॉर्पोरेट वैल्यू चेन्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 6 years as Sehat Kahani is born, it has become one of the leading telemedicine platforms in Pakistan. इस वक्त सेहत कहानी के 49 clinics हैं across low income areas, सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वो दूर दराज इलाके जहाँ पे फिजिकल डॉक्टर और ख़ास तौर पे फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमारे क्लिनिक्स आज काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस किस्म का आज कोई दूसरा इदारा नहीं है जो प्राइवेट टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स पे काम कर रहा हो। आज सेहत कहानी कॉर्पोरेट्स का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है कंट्री में। 650 कॉर्पोरेट से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स जो हैं वो हमारी ऐप को यूज़ करती हैं। दे डाउनलोड इट एंड दे यूज़ इट फॉर देयर एम्प्लॉयज़ वेलनेस एंड देयर फैमिलीज़। और हमारी ऐप के 1.1 मिलियन यूज़र्स हैं। और इस पूरी जर्नी में हमने 7,500 फीमेल डॉक्टर्स को एम्पावर किया है कि वो ऐप पे आकर अपने घर से बैठकर कंसल्टेशन कर सकें। एंड एज अ फीमेल फाउंडर ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमने इतनी सारी फीमेल डॉक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो रीइंटीग्रेट हो सकें वर्कफोर्स के अंदर। एंड एज आई टॉक अबाउट माई पर्सनल जर्नी, जैसे जैसे मैंने सेहत कहानी बनाती रही, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट अ लॉट ऑफ प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स। सो आई एम अ यंग ग्लोबल लीडर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं पाकिस्तान की पहली रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज विनर हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली वी एम्पावर अवार्डी हूँ, और मैं उन 5 खवातीन में से एक हूँ जिन्होंने वुमेन इन हेल्थ ग्लोबल फोरम को हीरोइंस ऑफ हेल्थ केयर का अवार्ड दिया। मुझसे पहले ये सिर्फ 3 पाकिस्तानी खवातीन को मिल चुका है। एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जब मैं बाहर जाऊँ तो मैं रिप्रेजेंट करूँ अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ पाकिस्तान, about the good work that is happening, about the challenges that we have in our healthcare system. And that raised my exposure massively. इसके अलावा पाकिस्तान की वाहिद कंपनी थी सेहत कहानी इन 2022 जिसको फोर्ब्स 100 टू वॉच एशिया लिस्ट, यानी कि वो कंपनीज जिनको आप वॉच करते हैं कि वो किस तरह आगे ग्रो करेंगी, वो बिजनेसेस जो एक्सपैंड करेंगे, उसमें मेंशन किया गया। सेहत कहानी पाकिस्तान की वो अकेली वाहिद कंपनी थी, particularly as a female-led company, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी, that was mentioned in Forbes in 2022. So I think as we are moving forward, a lot of people ask me, what is your motivation? Why do you keep doing this? इसके साथ साथ अब मेरे 2 बच्चे हैं। I'm a mother of 2 young beautiful girls. I'm a full-time mother, a wife, a daughter. And it's very hard to juggle a family life and a work-life balance when you're building such a big organization. लेकिन मेरी जो motivation है वो हमारे patient से आती है। हमने एक 17 साल की लड़की में मानसेरा में थायराइड कैंसर डायग्नोज किया जस्ट ऑन टेलीमेडिसिन। हमने एक पेशेंट को ट्रीट किया जिसको 20 साल से इनफर्टिलिटी थी, और आप सोच सकते हैं कि खातून को जब एक गांव में इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि उनको बांझ करार दिया जाता है, तो व्हाट आर द सोशल इश्यूज जिससे वो गुजरती है और उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है।
So we treated her and alhamdulillah she was blessed with a very, very beautiful child. एक किस्सा जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, एक 16 साल के बच्चे ने हमारी ऐप पे कांटेक्ट किया अपने बाथरूम से, जब उसके पेरेंट्स ड्राइंग रूम में बैठे थे एंड दैट किड वाज सुसाइडल एंड ही नीडेड अ साइकोलॉजिस्ट, और वो उठ के अपने बाथरूम से ड्राइंग रूम में नहीं जा पा रहा था अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, एंड ही कनेक्टेड अस with he connected through Sehat Kahani app with a psychologist, and the psychologist was able to calm him down, stabilize him and start his treatment. और इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जो रोज़ हमें एम्पावर करते हैं कि हम वापस आएँ और सेहत कहानी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे काम करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आधा डॉक्टर है हज़ार लोगों के लिए. दिस इज़ अ वेरी वेरी लो नंबर. आपके और मेरे जैसे लोग जाकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग गांव में, देहातों में, छोटे एरियाज़ में रहते हैं, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, उनके इश्यूज डायग्नोज ही नहीं हो पाते, और इसी वजह से वो कभी फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में किसी एक्टिविटी में, बिकॉज उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती. तो आज हमें 6 साल हो गए. आई हैव अ टीम ऑफ 300+ पीपल विच इज़ वर्किंग अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड हेल्थ केयर. और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में टेली मेडिसिन या ऑनलाइन डॉक्टर की फैसिलिटी जो है वो एक प्रिविलेज नहीं है, एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है अगर हमने अपने इस डॉक्टर पेशेंट गैप को कम करना है. तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5 years हम कम से कम 24 मिलियन लोगों को रीच कर सकें. हम अपने डॉक्टर नेटवर्क को 7,500 डॉक्टर्स से 50,000 डॉक्टर्स पे लेके जा सकें. और मेरा जो एक सबसे बड़ा विजन है वो ये कि हम एक पाकिस्तानी सर्विस को रीजनल वाइज फैला सकें, ग्लोबली एक्सपैंड कर सकें. तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट इश्यूज़ हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, वहाँ पे सेहत कहानी के डिफरेंट वर्जन्स को हम लेके जा सकें, स्प्रेड कर सकें, ताकि पाकिस्तान से एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकले जो पूरी दुनिया के डॉक्टर पेशेंट गैप को सॉल्व कर सके. सो दिस इज़ माई जर्नी. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इट वाज अ प्लेजर शेयरिंग विद यू. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, I have a card. I'll just give it to you. Can you all hear me? Okay, now they can hear me. Thank you very much, Dr. Sarah Khurram. That was an amazing story. Now, may I please request Kalpana Devi to come to the stage to talk about, for our next bite, which is stories of the past and hopes for the future. Give it up for Kalpana Devi. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kalpana. So everybody knows that I am from India. So मैं यकीन दिलाती हूँ सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह I am Pakistani. So please believe me कि I am Pakistani. And Sindh is the only province where every community feel very comfortable, like we minority. और आई एम वेरी प्राउड कि मैं माइग्रेट करके नहीं आई. मैं जन्मों से सिंधी हूँ. सिंस माई बर्थ आई एम सिंधी. सो बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी, so definitely I believe being a Sindhi, being a Pakistani, कि सजन ऐं साणी भिटाई घोट को मैं याद नहीं करूं तो दिस इज़ मेरी कोई भी जर्नी उनके बगैर जो है ना वो पूरी नहीं है. कि सजन ऐं साणी कंहिं अणासीअ विसरे, सजन ऐं साणीअ कंहिं अणासीअ विसरे, हैफ़ तिन्हनि ते होए वतन जिन विसारियो. आप ताली बजा सकते हैं. अगर समझ में नहीं भी आया तो भिटाई घोट फरमाते हैं कि जो सजन ऐं साणी है, मतलब मोहब्बत जो ज़मीन की है वो कोई भी बाशऊर बंदा भुला नहीं सकता. और उस पे हैफ है, उस पे
मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स कि क्या कहूँ कि वो बंदा बड़ा खबीस है जो अपनी धरती को भुला देता है. So this is the contention of Bhitai Ghode's words. I'm from Ladkana, basically from Sakhar. मेरी जो ग्रूमिंग हुई वो बड़ी साधारण सी फैमिली के जहाँ पर जो है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरी फैमिली की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि सिंध में नहीं था. वैसे तो सिंध की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसमें तो डांसिंग गर्ल भी हमारी सिंध से आई है, पैया भी हमारे सिंध से आया है, और वाइट गोल्ड जो है वो भी सिंध से है. लेकिन मेरी फैमिली का कुछ अपना ही तरीक़ेकार था कि चलो बेटे को पढ़ा दो और बेटी को छोड़ दो. इन सर्कमस्टांसेस में मैं पढ़ी, लेकिन नॉट ओनली पढ़ी, लेकिन मैंने अपनी जो पढ़ाई की जो ख़र्चा था वो भी मुझे ख़ुद से करना पड़ा. बिकॉज़ के मेरे पेरेंट्स को शायद यही टाइम था कि वो बच्चे पैदा करते थे, और हम जो हैं वो 7 बहनें और 6 भाई हैं. मतलब हमारे अब्बे अम्मी को बड़ा टाइम था कि सिर्फ बच्चे ही पैदा किए, लेकिन बच्चों को की डिज़ायर क्या है दे डजंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इन सर्कमस्टांसेस में पढ़ी और ख़ुद से मैं बहुत अच्छी स्टिचिंग करती थी और पीको करती थी. ऑल दीज थिंग्स आई डिड, और उसमें से मैं अपना एजुकेशन का जो है ख़र्चा करती थी. एंड देन थोड़ा बहुत पॉलिटिकल शऊर मेरी फैमिली से ही था कि MRD की तहरीक भी सिंध से चली, और हमेशा सिंध ने ही कंट्रीब्यूट किया है कि जो भी एजिटेशन चली है वो सिंध से चली है. तो वो माइंडसेट मेरा बना हुआ था. तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन घर ऐसा था कि जहाँ मेरे भाई, मैंने उनके नाम रखे हुए थे कि हमें लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं थी, हमें फुल स्लीव्स पहनने हैं. टुडे आई एम आल्सो वेयरिंग सेम थिंग. तो मेरे घर का माहौल ऐसे लगता था. मैंने भाइयों के नाम रखे थे. एक भाई को मैंने मौलाना फजल रहमान कहा था, सॉरी अगर मेरे पे फतवा आ जाए तो, और एक भाई का नाम मैंने अकबर ख़ान बुकटी रखा था, क्योंकि जब वो आते थे तो हमें जुर्रत नहीं होती थी कि हम तेज़ आवाज़ में बोलें या कोई ऐसी बात करें. और आई लाइक सॉन्ग्स, आई लाइक डांसिंग, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे. मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है, लेकिन मैं किशोर कुमार को गा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे घर में जो बैठे हुए थे वो बड़े आई हैव नो वर्ड्स के क्या कहूँ मैं उनको. तो ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, और मैंने अपने उसके लिए मैंने जो अर्निंग की वो भी मैंने खुद की. Finally, I completed my graduation, I completed my, all these things I have completed. After that, कि हमारी हिंदू कम्युनिटी में ये है कि हमें बचपन से ये कहा जाता है कि भाई आपने तो शादी करनी है, घर बसाना है, पति की सेवा करनी है. कभी ये नहीं कहा कि पति ने आपकी सेवा करनी है. अभी मुझे पता चला है कि पति भी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया कि आपको पति की सेवा करनी है और उसके पूरे ख़ानदान की सेवा करनी है. तो ये माइंडसेट हमारा बना हुआ था कि ठीक है भाई मुझे शादी ही करनी है और पति की सेवा ही करनी है. फाइनली मेरी शादी हो गई, और एक ऐसे घराने में हो गई जो सिंध का लेफ्टिस्ट घराना था, और जिनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तहरीक में था. My father-in-law, Sobo Gyanchandani, I was the daughter-in-law, I am still daughter-in-law of Sobo Gyanchandani, और मेरी उस घर में शादी हुई. तो I felt very lucky कि मुझे उस घर से जो है रिश्ता आया है. मुझे ये ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है कि वो रिश्ता मेरे लिए क्यों आया. क्योंकि बाबा 88 में इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करे. बाबा मीन्स सोबो ज्ञानचंदानी. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ Rabindranath Tagore,
एंड ही वॉज लेफ्टिस्ट, और उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तहरीक में भी रहा। साईं जीम सईद के वो दोस्त भी रहे, और जो भी हमारी तहरीकें थी उसमें बाबा का कंट्रीब्यूशन था। तो मुझे जब हमारे घर में उसका रिश्ता आया तो आई वॉज फील्ड लकी कि मुझे सोबो ज्ञानचंदानी के घर की बहू बनना है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्यों बन रही हूँ, ये एक अलग स्टोरी है। फाइनली वो रिश्ता हो जाता है और मेरी शादी होती है। और जब मेरी शादी होती है आई वॉज ओनली 19 ईयर्स एंड माई हस्बैंड वॉज 41 ईयर्स। तो ये गैप भी था, एंड ही वॉज ड्रग एडिक्ट। तो इसीलिए वो इतने बड़े बड़े घराने का रिश्ता मेरे लिए आया था, क्योंकि 88 में जब इलेक्शन हुए थे तो मैं बाबा की जैसे कहते हैं कि सपोर्टर थी, मेरी पूरी फैमिली उनकी सपोर्टर थी, एंड आई वॉज एजेंट ऑफ माई फादर इन लॉ। तो मुझे ये फील हुआ कि शायद मुझे इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं मिडिल क्लास की थी। लेकिन मेरे घर में मैंने एक पोइट्री लिखी थी, कच्चा घर और पक्का घर। तो उस कच्चे घर में हम सारे लोग मोहब्बत से रहते थे, मोहब्बत बांटते थे। लेकिन जब मैं पक्के घर में गई तो वो पक्का घर ऐसा था कि जहाँ उनको एक बहू नहीं चाहिए थी, एक नर्स भी चाहिए थी, और उनको एक घर के लिए कुक भी चाहिए था, और उनके ड्रग एडिक्ट बेटे के लिए एक नर्स भी चाहिए थी। सो बड़ी छोटी एज में मैं नर्स भी बन गई, और मैं जो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें मैंने वो अडॉप्ट कर ली। क्योंकि जब मैं शादी करके गई तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि बेटा अब तुम इस घर में आई हो तो तुम्हारी अर्थी यहाँ से निकलेगी। तो मेरा माइंड बन गया कि अगर मैं ज़िंदा निकली इस घर से तो मेरी दूसरी बहनों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये सारे टैबूज मेरे ऊपर फॉइस्टेड किए गए कि मुझे अब मर के ही निकलना है, मीन्स कि अर्थी पे ही निकलना है। तो अब अर्थी तो तब निकलेगी ना जब मैं मरूंगी, और मैं भी बड़ी ढीठ हूँ कि मरी नहीं अभी तक। और मैंने एक ऐसे बंदे से शादी कर ली कि जिसको कोई होश नहीं था, और जब हमारे फेरे हो रहे थे, जब हम शादी के बंधन में बंध रहे थे, तो मैं आई वॉज शॉक्ड जब मैं उनको देख रही थी कि ये मेरा बंदा है, इससे मेरी शादी हुई है। तो मुझे एक दो लाइनें याद आई कि तोखे पी चवां त मां मरां, जे तोखे भाव बि तोखे चई न सघां, वर अहिड़ो पी ॾिनो आहे मूंखे, वर अहिड़ो भाउ ॾिनो आहे मूंखे। कि मैं उसको ना भाई कह सकती थी, ना मैं दादा कह सकती थी, वो मेरा शौहर था। खैर मैंने पूरी कोशिश की, और आई हैड कंप्लीटेड माई BA ओनली जब मेरी शादी हुई। तो आफ्टर माई मैरिज पूरा महीना तो मैंने अपने मियाँ को उठते नहीं देखा, बिकॉज कि ही वॉज ह्यूज ड्रग एडिक्ट। लेकिन वो सिंध के बड़े नामवर शख्स के बेटे थे। तो अमीर लोगों के पाप धुल जाते हैं, और हम जैसे गरीबों के पाप जो है ना वो नज़र आ जाते हैं। तो मैं गरीब घर से थी और वो अमीर घर था, और मुझे ये इम्प्रेशन था कि मुझे शायद मेरी एबिलिटी की वजह से इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। फाइनली मैं जब उस घर में गई तो वो मेरा जो टाइम पीरियड था बड़ा वर्स्ट था। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे आगे पढ़ना है और कुछ करना है। सो मैंने LLB पार्ट 1 किया, और जब LLB पार्ट 1 किया तो आई हैड अ बेबी, हर नेम इज़ सोरठ, नाउ शी इज़ इन एडनबरा, शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स। तो जब मैंने कंसीव की बेबी तो सारे लोग परेशान थे कि हाउ शी कंसीव्ड बेबी, बिकॉज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन। लेकिन मैंने कंसीव कर लिया, और वो शुक्र है कि बेबी शी इज़ गुड एंड शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स इन एडनबरा। सो आफ्टर दैट जब मैंने फर्स्ट ईयर दिया तो मुझे वो बेटी थी,
तो मेरी सास ने मुझे कहा कि ये पढ़ाई वढ़ाई का पंगा हमारे साथ मत करो, और जो भी काम है तुम्हारे हिस्से में वो कंप्लीट करके अपना पेपर दे के जाना है, ऐसे नहीं। और मेरा सिजेरियन था, लेकिन फिर भी मुझे पूरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके और फिर मैंने अपने पेपर पे जाना होता था, और मैं गई, मैंने हिम्मत नहीं हारी एटलीस्ट। और जब फाइनल ईयर किया तो आई वॉज फुल टर्म प्रेगनेंसी आई हैड। उसके बावजूद भी यही मेरे मत्थे में था कि अपना जो भी तुम्हारा काम है वो करके जाना है, और वो करके मैं जाती थी। और एक चेयर पे बैठती थी, दूसरी चेयर पे मैं अपने पैर रखती थी कि मेरे पैर सूज जाते थे। और मैंने फिर सेकेंड ईयर मैंने कंप्लीट किया फाइनली। ये मेरे घर के सर्कमस्टेंसेस थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम सक्सेसफुल जो लेडीज़ हैं वो ऐसे ही आ गई हैं। माई लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, उसमें बहुत अप्स डाउन थे। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शनि महाराज मेरी कुंडली में विराजमान थे, और वाकई वो 7 साल शनि महाराज मेरे कुंडली में विराजमान थे। लेकिन इन दीज सर्कमस्टांसेस मैंने आई हैड कंप्लीटेड माई LLB, और जब मेरा वकालत का स्टार्ट करने का टाइम आया तो फिर वही कि मियाँ की तरफ से, भले वो ड्रग एडिक्ट था। मैंने एक नज़म लिखी थी, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं, वो सिंधी में है कि औरत तुझी ही ये कहानी आ, औरत तेरी ये कहानी है, कुदरत मुर्श मारे तो तू डुहागना, कुदरत अगर शोहर मार दे तो तुम अभागन हो, और अगर वो जिंदा है तो तुम सुहागन हो। नशेई और जुआरी के होते हुए तुम सुहागन हो। तुम जो तक को घर भी ना है, तुम्हारा तो को घर भी नहीं है। पी परनाए बार लाथो आ, बाप ने शादी करके अपना बोझ उतार दिया। मुड़सके मणि त रानिया, शोहर को अच्छी लगी तो रानी हो, नहीं अच्छी लगी तो नौकरानी हो। औरत हंदजी चादर आ, औरत बिस्तरे की चादर है, सफेद है तो बिछी हुई है, मैली है तो जमीन पे है। औरत तुझी ये कहानी आ, कुदरत मुड़स मारे तो डुहागना, नशे हैं जुआरी हूंदे तू सुहागना। उसके बाद फिर मैंने ये सेकेंड ईयर किया, और अनफॉर्चुनेटली आई केम टू नो माई हस्बैंड वॉज सफरिंग एड्स, और ये चीज़ मुझसे छुपाई गई थी। पर फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि आई रिमेंबर्ड कि मेरे भाई ने कहा था कि अब तुम्हारा भाग यही है, तुम्हारा नसीब यही है। और उस नसीब को, उस भाग को मैंने अपनी सक्सेस में चेंज किया, क्योंकि बाबा के साथ, बाबा मीन्स माय फादर इन लॉ, मैं उनको पूछती थी। ही वॉज माई क्रश, ही वॉज माई आइडियल। तो इस वजह से मैंने बाबा की नर्स भी होके रह लिया, अपने शोहर की नर्स होके भी रह लिया, और अपने ये टारगेट भी अचीव करती रही, लेकिन बड़े ख़तरनाक सरकमस्टेंसेस में। फाइनली हम सेपरेट भी हुए, लेकिन मेरी जो स्ट्रगल थी वो चलती रही। मीनवाइल आफ्टर डिमाइस ऑफ माय फर्स्ट हस्बैंड आई कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज, और ये भी कोई आसान नहीं है मेरी कम्युनिटी में, जबकि जो है भगवान राम के फादर जो हैं दशरथ, उन्होंने 3 शादियां की थी। लेकिन हमारे यहाँ भगवानों के लिए तो ये एक्सेप्शनल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। मेरे लिए ये एक्सेप्शनल था, वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ हिंदू कम्युनिटी, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने शायद हर वो काम वो किया जो अगेंस्ट द सोसाइटी था, लेकिन आई एम लकी माय हस्बैंड, वो जो मेरे लिए आज टुडे आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। तो एक वो मर्द था और एक ये है। तो मैं आज किसी से डिस्कशन कर रही थी कि यार आखिर औरत क्या चाहती है ज़िंदगी में। ये वुमेन मार्च के हवाले से मुझे किसी ने इनवाइट किया, तो मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो, क्योंकि हम मेल एंड फीमेल
बोथ आर वेरी इसेंशियल फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम ये कहें कि हम मर्दों के बिना रह सकते हैं तो हम गलत कह रहे हैं, और अगर हम ये मर्द ये कहें कि हम औरत के सिवा रह सकते हैं तो ये भी गलत है। तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ माई जर्नी। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड माई एडवोकेसी। अच्छा, अब जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो लाड़काना में नो कॉन्सेप्ट, बिकॉज आफ्टर मैरिज, माई मैरिज, आई एम सेटल्ड इन लाड़काना। तो लाड़काना में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फीमेल एडवोकेट कैसे होती हैं। तो मैंने अपनी इस जर्नी जो स्टार्ट की वो सक्खर से की। सक्खर में कुछ लेडीज़ थीं, लेकिन वहाँ भी ये था कि जब मैं पहले दिन गई तो मैं रिक्शा से उतरी तो आई हैड फाइल्स, मेरे सीनियर के थे, तो मैं इतनी कंफ्यूज थी कि क्योंकि मैंने ये एटमॉस्फेयर इससे पहले नहीं देखा था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मैं इस तरह जाऊं। तो जब मैं वहाँ गई तो कंफ्यूजन में मेरे फाइल गिर गए। तो एक एडवोकेट खड़े थे, वो मुझे देख रहे थे और मैं कंफ्यूज हो रही थी। उसने मुझे सारे समेट के दिए और फाइनली उसने यही कहा, मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्योंकि ये हमारे मर्दों का फंडामेंटल राइट है कि एक तो शायर बन जाते हैं दूसरे की बीवी के लिए, और तारीफ भी दूसरे की बीवी की करते हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि अच्छा मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, ओके। लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल जर्नी थी कि सक्खर में 2-4 फीमेल एडवोकेट तो थी, लेकिन बड़ा मसला था वहाँ भी। मेरे सीनियर के केसेस थे, मैं उसके केसेस में जाती थी। तो मैं नाम नहीं लूँगी, एक कोर्ट में जब मैं जाती थी तो जब उस बंदे ने मुझे देखा, जज ने, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा सच बोल रही हूँ, तो वो अपने केसेस जल्दी ख़त्म करके और फिर कहता था कि मैडम आप आएँ, आपके केसेस चेंबर में चलेंगे। मैं चली जाती थी, मैं समझती थी कि मैं इतनी अच्छी वकील हूँ, लेकिन मैं वकील अच्छी नहीं थी। उस बंदे के माइंड सेट में था कि ये, क्योंकि मैं ऐसे पॉलिटिकल घराने से थी कि मेरी चीज़ें अखबार में भी आती थी और एंड एवरीबडी नोज़ कि शी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ सोबो ज्ञान चंदानी, शी इज़ कल्पना, वॉट एवर जो भी होता है वो तकरीबन न्यूज़ में आता रहता था। तो उसने बंदे ने फिर मुझे बुलाया कि आपके केसेस में चेंबर में चला रहा हूँ, और मेरे सीनियर के केस धड़ाधड़ डिक्री होने लगे। डिक्री मीन्स के डिसाइड होने लगे। फाइनली उस बंदे ने प्रपोज्ड मी कि एक दिन उसने मुझे फाइनली प्रपोज किया कि कल्पना आई वांट टू मैरी यू। भाई क्यों? मतलब ये जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि अब तो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन ये चीज़ें हमने फेस की हैं। और कभी कभी मैं फील करती थी कि मैं इस कोर्ट में नहीं जाऊँ। वो इसलिए कि फ़ीमेल के पास जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, या फीमेल के पास जो आँख होती है, और जिसकी ग्रूमिंग मेरे ख्याल में कुछ संस्कार में होती है, तो उसके लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट बिग डील। मुझे फील हो गया था कि कुछ है। फाइनली ही प्रपोज मी कि कल्पना आई वांट टू मैरी यू। अरे भाई आई हैव 2 किड्स, मैंने एडाप्ट करने हैं वो। तो मैंने फाइनली एक दिन जुर्रत करके उससे कहा कि ओके आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो अब कन्वर्ट कौन होगा? आई एम हिंदू। तो उसने कहा कि डेफिनेटली तुम। उस दिन पता नहीं कहाँ से मुझे जुर्रत आ गई और मैंने उससे कहा कि यार सुने, आप जिसको मैं चाहूँगी ना, तो उसके लिए मैंने कन्वर्ट भी हो जाना है, और मैंने जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन में वो अडॉप्ट कर लूँगी। लेकिन अभी तो आप मुझे पसंद कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यू? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो मुझ पे फतवा हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो इश्क करता है तो फतवा क्या बात है? फतवा मेरे इश्क में तुम बर्दाश्त कर लो। लेकिन ऑल ऑफ सडन ही रिफ्यूज्ड, और उसने मेरा नाम रख दिया इंतहा पसंद कल्पना, एंड आई वॉज इंतहा पसंद कल्पना। एंड शायद इन आईज ऑफ दैट मैन आई एम इंतहा पसंद कल्पना। लेकिन ये
ये जर्नी मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो जो यंगस्टर, वो जो लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ये फील्ड भी नॉट बेड ऑफ रोजेस कि हमने ऐसे अचीव किया है। बहरहाल वो सखर का मैंने टाइम कंप्लीट किया, देन आई बैक टू लाड़काना। अब जब मैं लाड़काना आई कि उन दिनों में फिर मेरे जो हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड, ही वॉज सफरिंग एड्स, तो मुझे फिर उनके लिए आना पड़ा। और मेरे फादर इन लॉ, उनको ज़रूरत थी मेरी, तो फिर मैं सखर से लाड़काना वापस आई कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और मैंने बड़ी खुशी से उनकी सेवा भी की, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस जो है लाड़काना में शुरू की। अब जब मैं लाड़काना आई तो वही इशू, वही मसले, वही इशू। और लाड़काना में बिफोर मी कोई भी वहाँ पर फीमेल एडवोकेट नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ लोग जो थे वो देखने के लिए आते थे और सिंधी में कहते थे, यार हलो बाहर में चलें, एक नई वायाणी वकीलियाणी आई आ। वायाणी मीन्स कि मैं हिंदू, वकीलियाणी मीन्स के फीमेल, कि जाओ चलें उसको जाके देखें। तो वो देखने के लिए आते थे और मैं समझती थी कि शायद मेरे क्लाइंट बन के आ रहे हैं और मुझे केस देंगे, और मैं इसी इम्प्रेशन में होती थी। लेकिन ये भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि ये बड़े बड़े ख़त आते थे, कभी आँखों पे तारीफ़ होती थी, कभी चलने में पता नहीं क्या क्या होता था, और ये सारी चीज़ें मैंने फेस की। फाइनली एक दिन एक बंदा मैंने उसे देखा, तो उसने क्या किया कि अखबार में सुराख करके वो मुझे देख रहा था, अखबार में सुराख करके वो होल बना के वो मुझे देख रहा था। अच्छा, हमारे लिए वॉशरूम जाना बड़ा मुश्किल था, वॉशरूम नहीं था, कोई बार सेपरेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इन दीज सर्कमस्टेंसेस I had completed my journey, started my journey, और मैंने complete किया। और मैंने election, I fought election as a, I was elected as a vice president of district bar लाड़काना। ये first time हुआ है पूरी entire मेरे ख्याल में सिंध में कि मैं as a elected vice president बार बनी, और 3 साल के लिए मैं बार में वाइस प्रेसिडेंट रही। उसके बाद में हाई कोर्ट में भी डिफरेंट स्टेटस पे रही, जर्नी चलती रही। लेकिन मेरा मोटिव यही रहा कि इन इंटीरियर मोस्ट ऑफ फीमेल्स फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, कारोकारी का इशू, डिस्क्रिमिनेटरी ये जो थिंकिंग है लॉज में नहीं है, फंडामेंट हमारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं ये बोलते हुए मुझे कोई भी वो नहीं फील हो रहा कि इस्लाम ने औरत को हक दिया है और इन रिटन दिया है, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है, स्पेशली इन प्रॉपर्टी, स्पेशली राइट ऑफ देयर किड्स एज वेल, ये चीज़ें उनको मिलती नहीं हैं। मैंने कोशिश की कि मैं इस पे फोकस करूं, और मोस्टली मेरे केसेस जो थे वो 70% फ्री ऑफ कास्ट होते थे, और 30% जो थे उसमें मुझे पैसे मिलते थे जिससे मेरा किचन चलता था। अच्छा, इस दौरान मेरे जो एक्स हस्बैंड थे ड्यू टू एड्स उनकी डेथ हो गई, तो देन आई हैड कॉन्ट्रैक्टेड सेकेंड मैरिज। उन्होंने मुझे संभाला, मेरी बेटी को संभाला, और आई एम लकी ही इज़ माई पार्टनर। और मैं उसे साईं बोलती हूँ सिंधी में, एंड ही इज़ वाकई साईं। तो मुझे खुशी है कि आई एम वाइफ ऑफ डॉक्टर अमृत लाल। ही इज़ नॉट हेयर, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, और मेरा बेटा भी। तो उसके बाद ये मेरी जर्नी चलती रही। उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी की इलेक्शन फाइट की। अपनी जो कम्युनिटी आई एम बिलोंग्स टू, आपने तो समझ लिया होगा, आई एम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो लाड़काना के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़, वो वहाँ के लोग हलवा समझ के बांट रहे थे।
जो भी हमारे मुखी थे, जो भी हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने ये समझ लिया कि ये प्रॉपर्टी माले गनीमत है, इसको लो और दो और जो भी मिले उसको ले लो आप। तो फिर मुझे आई फेल्ट के मुझे ये इस इलेक्शन में आना चाहिए, और लकीली मैंने वो इलेक्शन जीता एंड आई वाज द फर्स्ट हिंदू लेडी इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन लाड़काना। इन सब कॉन्टिनेंट में तो कहूँगी कि सब कॉन्टिनेंट में भी कोई भी मुखी औरत नहीं है, लेकिन वो भी जर्नी इतनी मुश्किल थी कि मैंने पैसे वाले लोगों को डिफीट किया, जिन्होंने माले गनीमत समझ के लाड़काना पे अजारादारी की थी। तो उन लोगों ने समझा कि शायद कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, लेकिन मैंने और कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट ये किया कि लाड़काना के हार्ट ऑफ सिटी में धर्मशाला है, वहाँ पर जाके बैठती थी, लोगों के मसले सुनती थी। हमारे मसले और कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि हम इतने दिलेर नहीं हैं। हम तो धमकी भी देते हैं ना, तो हम धमकी भी किसी और की देते हैं कि इसको चांडियों से उठा लेंगे, इसको जतोइयों से गोली लगवा देंगे। मैं उन कम्युनिटी की वो नहीं कर रही, लेकिन हम धमकी भी किसी और की देते हैं। हम अपनी धमकी भी नहीं देते कि मैं तुम्हें देख लूँगी या मैं तुम्हें उठवा लूँगी या उठवा लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम धमकी भी किसी और की देते हैं। तो जब ये मैं आई वहाँ पर, तो लोगों के यही मसाइल थे, क्योंकि हम किसी पे डोमिनेंट बन के नहीं बैठते, कहीं कब्जे नहीं करते, कारोकारी वाला इशू नहीं है, मर्डर केसेस हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के इशू हैं, फैमिली के इशू हैं, वो फ्रीक्वेंटली हल होते रहे। मैं जब भी अपनी ऑफिस कंप्लीट करती थी, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि शाम को हम 6 से 9 तक मैं अपनी ऑफिस में बैठती थी, उसके बाद में जाके धर्मशाला बैठती थी, और वहाँ पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं था कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, हमारे काफ़ी इश्यूज मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी होते थे, तो सबको मैं बुलाती थी और उनके मसले कोशिश करके हल करती थी। और दूसरी एक बात कि हमारी प्रॉपर्टीज़ पे काबिज थे वो पैसे वाले लोग, मैं जिन्हें सेठिया कहती हूँ, जिन्होंने आफ्टर पाकिस्तान उन्होंने अजारादारी अपनी बनाई हुई थी, तो उन लोगों ने वो काबिज बन के बैठे हुए थे। तो मैंने बिकॉज के आई एम द एडवोकेट, तो मैंने वो चीज़ें उनसे आज़ाद करवाई। वो 30 साल का कब्ज़ा और 40 साल का कब्ज़ा वो मैंने उनसे ले लिया, लेकिन अब भी ये है कि वो लोग मुझे हज़म नहीं करते। अब मैं इलेक्ट तो होके आ गई, लेकिन उन लोगों ने अभी एक ड्राफ्ट बनाया है कि कोई भी औरत हमारी चेयरपर्सन या मेंबर नहीं हो सकती, और मैं उस पर लड़ रही हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई हूँ, मैं गई हूँ उस तरफ। तो ये मेरी फाइट चल रही है, और अभी आई एम थैंकफुल टू यू ऑल ऑडियंस के आई एम हेयर। और मैंने अपनी राम कथा आपको सुनाई। ये राम कथा इसलिए थी कि ये इंस्पिरेशन हो हमारे यंगस्टर के लिए। और अभी ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि आई एम फर्स्ट हिंदू एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, और ये सिंध को क्रेडिट जाता है, ये सिंध को क्रेडिट जाता है। ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हूँ, विमेन राइट्स पे काम कर रही हूँ, और कोशिश यही है कि वो जो सिंध के डीएनए में है कि हम सूफियों की ज़मीन से हैं, और मुझे फ़ख्र है कि आई एम सिंधी। मैं सिंध की ज़मीन से हूँ, जहाँ पर हमारी दिवालियाँ साथ होती हैं, होलियाँ साथ होती हैं, ईदें साथ होती हैं। और दूसरी एक बात ज़रूर बताऊँ, मुझे इशारे हो रहे हैं कि वाइंड अप करें, मैं आई विल कंक्लूड माय भाषण। मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि 2000 में हमने एक एजिटेशन शुरू की थी, बिकॉज के ज़िया रजीम ने हमें अलग कर दिया था।
हम वोट नहीं दे सकते थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आती है, हिंदू कम्युनिटी भी आती है, तो हम सेपरेट हो गए थे. वी वर डिक्लेयर्ड बाय ज़िया regime एज अछूत. तो वो एजिटेशन भी लाड़काना से चली और वो हमने शुरू की. एंड आई वॉज द फर्स्ट हिंदू अलोन लेडी. उस एजिटेशन को हमने 2 साल चलाया और लकीली ज़िया regime ने तो उसको कंप्लीट कर दिया. ज़िया regime ने तो हमें अछूत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मुशर्रफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने वो रेस्टोर करवाई. और आज हमारी असेंबली में अगर जो भी ये बैठे हुए हैं तो उसका जो है श्रेय मुझे जा सकता है कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और आज ये रेस्टोर कर दिया. सो आई थिंक माय टाइम इज ओवर. ओके, ये मुझे कह रहे हैं जाओ. सो थैंक यू पेशेंसली मुझे सुनना. दिस इज माय जर्नी और लव यू टू ऑल. आई एम हेयर बिकॉज ऑफ वो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum everyone. I'm Aksa Tariq, and by education and by interest I'm actually a social scientist, but what I do at work or what I've done so far in my work experience has been in technology. So takriban 12 in STEAM as we call it, and these are stories that I thought okay, you know, we know about 40-50 people, let's put these stories together and really tell the world कि ये local context में ये real role models हैं which we can follow. And हमने सोचा कि जी 40-50 ख़वातीन हैं, इनका हम एक कवरेज करते हैं, मतलब ऑनलाइन पॉडकास्ट के थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट के थ्रू कर लेते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लेते हैं. एंड जब हमने उसमें अपना हाथ और अपना सारा दिल और दिमाग लगाया तो हमने देखा कि ऐसी इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं जिन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स की हैं. सो पाकिस्तानी ख़वातीन अब जहाज़ भी बना रही हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन गाड़ियाँ भी बना रही हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं दुनिया भर में. नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. You will look at you will find Pakistani women excelling in all these fields. And so that's why when we say we are building a community of Pakistani women in STEAM or women in teams, why we've changed it is because we feel like that is something that we need to give importance to. किसी ना किसी ने मेरे लिए ये रास्ता भी कार्व किया था कि मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में एंटर हूँ, इवन दो माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मैंने पहले बैचलर्स किया सोशल साइंस में, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट में, बट मेरा सारा काम जो है उसका ताल्लुक रहा है विद टेक्नोलॉजी. एंड दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू बी एबल टू शोकेस or put together for younger girls, for younger women, or women who've been out of the workforce. Because जब तक हम अपनी ख़वातीन को of course include नहीं करेंगे in the workforce, we will not be able to flourish as a country. अब जो इकोनॉमी के हालात हैं हम सबको पता है कि until and unless हर कोई एक घर से अपनी अपनी आमदनी नहीं कमा रहा तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना. एंड इसीलिए थ्रू द वर्क दैट वी आर डूइंग एट ग्रोएल लैब्स, व्हिच इज बेसिकली ग्रो एल, एल इज फॉर शी, फॉर फीमेल in French, and that's where our story really starts, that we wanted to bring in more access to digital. We wanted to bring in more access to education. And by education we mean not just formal education, but because अब इस सेंचुरी में वो ज़माना है अभी कि अब हम डिजिटल स्किल्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे एम्प्लॉयबल स्किल्स पे काम कर सकते हैं. सो 2020 में हमने ये काम शुरू किया एंड वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डिजिटल, एंड मैं ये हमेशा बात करती हूँ कि टेक्नोलॉजी वो एक ऐसा टूल है विच इज़ एन इक्वलाइज़र. आप भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ. वही टिकटॉक आपके लिए भी एक्सेसिबल है, वही टिकटॉक मेरे लिए भी एक्सेसिबल है, राइट? एंड बहुत से ऐसे लोग, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ स्मार्टफोन, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अगर हम इन टूल्स को, इन टेक्नोलॉजीज़ को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, ऑफ कोर्स लाइक एवरीथिंग इसका भी फ़ायदे हैं और इसके भी नुकसानात हैं, बट इनके फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं इफ़ वी हैव द राइट वे टू यूज़ इट. So we started with a lot of digital literacy skills, and by digital literacy we mean really basic skills like teaching people how to type, because अब data entry jobs बहुत available हैं. तो ख़वातीन जिनको अब मेरे से पहले डॉक्टर सारा ने ये बात की कि बहुत सारी ख़वातीन of course because of personal reasons or
family challenges or other, social issues, they are not able to step out of their households. And that's exactly what we are doing. We are telling them, okay, आप जहाँ बैठे हैं, आप वहीं से काम शुरू करें. तो अगर आपको एक बेसिक स्किल इस तरह का आ गया है कि आप डेटा टाइपिंग कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो जो भी स्किल आपके लिए काम करता है, make that work for you and then be more employable, right? And of course, because of COVID, हमें ये फ़ायदा हो गया कि we could actually spread across multiple cities as well. We could train women who did not have access otherwise to financial inclusion. They did not have access to any kind of digital literacy, any kind of digital means to an income. They now have access to all of this. So my work has, spread across multiple cities through the power of, again, technology. And मैं हमेशा पहले शुरू में जब हमने काम किया था, बिकॉज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये फील्ड्स यूजुअली हम ख़वातीन से एसोसिएट नहीं करते हैं, बट हमारी डे टू डे लाइफ में साइंस हमने बड़े होते हुए देखा है. मे बी वी डोंट थिंक ऑफ इट एज साइंस. आपने देखा होगा गांव देहातों में जब वो गोबर लगाते हैं अपनी दीवारों पे, दैट्स ऑल्सो साइंस, कि वो विंटर में जो है वार्म रखेगा और घर वार्म रखेगा, एंड सर्दियों में जो है वो और गर्मियों में उसको कूल रखेगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डे टू डे साइंस विच वी डोंट इवन रियलाइज कि हम अपनी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स दीज आर थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एंड ऑल्सो इम्प्रूव. तो औरतों का, ख़वातीन का, यंग लड़कियों का इन फील्ड्स में एंट्री होना और उन फील्ड्स में फिर रहना, this is something which we are trying to work on at Grow Labs, and I hope that, the way that somebody carved that way for me to be able to get here where I am today, where I am training and where I am, bringing these programs to women and girls who otherwise may not have had access. And I hope that, you will also sort of replicate that in your own capacity. Because हमें as women, हमें अक्सर यही लगता है कि, we are not supported or we're not part of the decision making. But somewhere, someone did take that stand for me, and I want to take that stand for other women and tell their stories. So if you have a story to share, if you do work in these fields, whether it's science, whether it's technology, whether it's engineering, whether it's arts, whether it's mathematics, reach out to us. We want to tell your stories. We want to show real life examples of Pakistani women in these fields, because I think I was just sort of talking outside कि बाहर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, and I said इतने ज़्यादा यहाँ पे opportunities आती हैं, but we often miss those opportunities because either we fall back or we don't think we are deserving of it. So I think I would just sort of conclude on this note that there are so many opportunities for women, and while there are not to take away from like any other industry. But I would say that, in a world full of, eat food festivals, we should definitely be a WOW festival. So thank you to the WOW team for having us here and putting together a great show, and a great show to really showcase what Pakistani women are capable of doing and the brilliant work that they're doing. We've all seen beautiful, science exhibits and workshops and hands-on activities. So I hope you make the most of this weekend, and thank you. Ladies and gentlemen, may I request you to come closer to the stage for our next performance by Ehsan and Nida, which is called Jhumar, which is a participatory dance performance. So, please, over to Lala. Ready? Ready, 1, 2, 3, 4, chak de! Oh! एक शॉट आउट होना चाहिए वो फेस्टिवल
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिटिश काउंसिल को तो हम नहीं भूल सकते। ब्रिटिश काउंसिल के लिए भी एक शॉर्ट आउट होगा, सेम शॉर्ट आउट होगा, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। एवरीवन रेडी? वेरी नाइस। रेडी 1 2 3 4 चक दे। ओहो ओहो बल्ला 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 बल्ला। बुर्रा पंजाबी। Well, as I'm a Sufi dhol player, I'm a first female Pakistani dhol player. Thank you, thank you, thank you. मुर्शद लाल की नौबत, लाल शहबाज कलंदर की नौबत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मुर्शद लाल की नौबत से शुरू करते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा।
DJ. Ladies and gentlemen, stay with us. Show bhi baki hai.
Da